now gathered in this virtual platform for this flagship program, that is NEP Orientation and Sensitization Program, launched by the Ministry of Education through University Grants Commission and jointly run by his son Garge Baba Amravati University through its Malvi Mission Teacher Training Center and one of the top leading and autonomous institute, that is Sitna Engineering, Sitna College of Engineering and Technology. Ma'am, we have launched this program in collaboration with one of our autonomous institute, that is Sitna College of Engineering and Technology, and another institute, that is Sitna School of Architecture and Planning. So this program is facilitated to both the centers, both the institutions, for their benefit, mutual beneficials. So friends, since last 3 days we are engaging in this program, and we have completed couple of themes of this program, and today we are going to discuss two different themes of this national education policy. First thing is that the student diversity and inclusive education. You know that the NEP has set out the targets to achieve the GER up to 50% up to 2035, and we have to achieve that in terms of societal oriented benefit. Not only societal oriented benefit, but we have also achieved the national development agenda of our country that has been launched by the Honorable Prime Minister in terms of Vikasit Bharat 2047. So you know that, friends, the very important concept of this policy, this policy is the student centric, and ultimate whatever may be the goals of this policy that has been drafted, or they are crafted with particular in that context, that the student should ultimately benefit, and student is a centric point. So we are going to discuss today the development learner centric approaches towards youth development, and to discuss this topic today we have with us a very great, eminent and scholarly personality, Dr. Rajuskar ma'am. Now, warm welcome in behalf of the Malvi Mission Teacher Training Center and Sitna College of Engineering and Technology. And now may I request Dr. Kaset sir to introduce our guest. Kaset sir, please. Yes, madam. Yes, sir. I heartily welcome to the today's resource person, Dr. Chitralekha Rajuskar, madam. Madam is working as a professor at Karve Institute of Social Sciences, Pune, from last 29 years. She is BSc, BA in Public Administration with MSW, MPhil, NET and SET with PhD. She is MPhil and PhD guide. She is having the good subject taught as trade union and industry relations, industrial sociology, personal procedure. Her MPhil research was a study of working condition and stress management in manufacturing industries of Pune. She is having her academic interest in social psychology, having area of specialization in human resource management, industrial relation, urban and rural community development. Her areas of expertise as capacity building and training program, training and evaluation. She is holding various honorary positions as director at Karve Institute of Social Science, Pune, for Family Counseling Center. She is also officiating principal at Ambedkar College of Social Work, Wardha. She is referee of PhD evaluation of thesis at Rashtrasnath Tukadoji Maharaj, Nagpur University, Nagpur. She organized and coordinated many workshops and seminars for the HR department at Pune. She is external committee member for POSH in manufacturing industry, automobile and consultancy. She is jury for the Excellence NGO Award 2015. She is also having her research interest in one of the project she completed. It is Maharashtra's Certified Pune project. It is baseline achievement study of Chandrapur district for Sarva Shiksha Abhiyan in Maharashtra 2005. She is also having completed the project for issues of old age people. She has published many papers
at international and national conferences and journals. She is recipient of Dr. Babasaheb Ambedkar Samata Puraskar, Dhyas Foundation Puraskar, and she is life member of MASWE. She participated in many state level, national level, and international level conferences. On behalf of SIPNA College of Engineering and Technology, Amravati, and SIPNA School of Planning and Architecture, Amravati, I heartily welcome Dr. Chitralekha Madam for the today's session. Welcome, Madam. Thank you very much. Ankit sir. Over to Ankit sir. Hello, Ankit sir, please. Ankit sir, Madam, you can please start. Yeah. Okay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Myself, Dr. Kirade, the principal of the institute. I also welcome you for this special session and hope that one, if you are ready, we can directly proceed ahead with your presentation. Yes, sir. Thank you. Yeah. Thank you. Thanks a lot. Yeah. Good afternoon to all of you. We know the topic is very much familiar to each and every professor. Those who are in the teaching field, for them, the student community, problems, their challenges, their limitations, and their interests also, we do handle every day. When we talk with the student, that time we came to know that the particular student is having a particular kind of potential, and we start our role as a motivator. So this is happened with everyone. So this topic is actually not new. Every day we are dealing with this topic. We are very much familiar with this topic. Not a single staff member, I would like to say, is not or will not agree with me that, madam, we don't know this. What is mean by learner-centric approach? The learner-centric approach is a everyday job of any professor, any teacher. So then why it is included, or why we have to think about it, or why we faculty members has to do for the reinforcement? All the time, the teacher community is coming across with some updates or with some additions in the syllabus or with some challenges with the student. We all know that earlier the education background during our period was quite slow. Nowadays, the teacher community and the parents community become secondary for the young generation. Now, with this statement, you may agree, yeah, you may disagree. But my observation, I would like to conclude that for them, mobile social media is the first priority. Is it an obstacle, or whether we have to think about the social media and has to think about the use of it and motivate our student community? So the answer is nowadays, yes. We may get upset. We may think about the traditional alternatives which are developing the reading habits amongst the young generation, or taking them to the ground activities, or helping them to understand the importance of reading and writing in their career. They are listening to us. But we all experiencing that this is not the priority for them. They would like to visit the Google website, and from that they would like to download few of the material and would like to talk with us. So they are mostly dependent on the social media. Then how the learner-centric education will help us, will help the college campus, will help the youth? This is what is the discussion we have to do. In almost all the colleges, sir, be with the first slide. I have not yet completed. In almost all the colleges,
NAC is a compulsion. And in addition to that, the syllabus as well as the characteristic feature, the second slide, sir, the characteristic feature of the young generation, thank you, is compelling us to think, to update, and to reflect by taking cognizance of the current scenario. If we will not do this, then somewhere else we may not be with the feeling of content, means satisfaction, and they also will not be happy with our session. So this gap has to be bridged. So what we can do, we are having a curriculum with some expectation that so and so number of credits you have to complete as a professor. The timetable is there. In addition to that, if something else we are expecting, their participation level depending upon the type of activity they decide. So this is what is happening. And nowadays we are experiencing it very challenging. So I would like to say, is it required? The answer is yes. It is not merely required from a degree point of view or from a completion of education point of view. It is required for generation to generation, and we are a mediator in between transfer of knowledge from one generation to another. This transfer of knowledge, if suppose, could not happen with the help of learner-centric education tools, techniques, or with some principles, then there will be a huge gap. And then again, there could be a problem, and the coping with that problem is again a challenge for we all fraternity. This is what is I would like to conclude about our topic. Now, just let us go by uh, each point. In between, if you are willing to share your experiences, those are also welcome. Learner-centric education refers to an educational approach that shifts the focus from teacher-led instruction to student-driven learning. Here, we have to give a lot of scope to the participation. Generally, in the classroom, we are using lecture method. Now, if suppose I will take the example of my classroom, then my subjects demand the participation level. The highest level of participation level is possible in my classroom. How? Because they are placed for 3 days in industries. I have a college. I have to go to college for 3 days only, and rest of the 3 days I have to visit to the industries. So they are placed there, and that exposure they are bringing in the classroom, and the assignment are more based on the industry institute interface. But in another subject, like take an example of physics, chemistry, or literature, there is a limitation. Then those limitations will mostly turn out into two to three exposure visits, or maybe with the help of discussion method. So we have to try out how our education or teaching methods or learning environment will be equipped for learner-centric approach. This is what is we have to think. Now come to the point second. Youth development today requires not just academic knowledge, but also personal growth, critical thinking, and real world skills. Whenever there is, I am also science background student. Followed by that, I have done my public administration to get matched with a human resource management. During my education period, the MA in public administration, this subject was not at a PG level, post-graduation level. So this was the option I have found out, because the career plan for me was well decided and I was moving accordingly. Whenever there is an admission of science student in my class, they are little bit cut off from the social life situations. Like they may not have experienced the rural life if they are purely from the urban life, like they are from the metro city, Kolkata, Mumbai, Delhi, or they are born and brought up in Pune and
haven't get a scope to move out of Pune. So they may not have visited the village. So what is meant by rural behavior? They may not able to think. So though they are very good in their achievements, few of the achievements maybe in a sports or maybe in the competitions, or maybe their orator skill or presentation skill about the English is very good. But those who are from rural background, they do dominate sometimes the urban population. So this is what is happening in our curriculum. In the science, what is happened? It is a one-way stream in that there is a less scope for the participation. This is what is I would like to say. More of the curriculum is asking us to understand and do it in a practical. Okay. So personal growth, critical thinking, and real world skills, these are the challenges for the rest of the specialization, we can say, or for rest of the disciplines, we can say. In our social science, we can discuss, we can take any issue, and on that issue, students are reflecting both the way. Yeah, sometimes they do get withdrawal, or sometimes they are totally left out or away from the activities which we would like to coordinate. But all these help them to rethink and analyze the surrounding. So this learner-centric approach is very important from a future point of view also, as we know that we are bombarded or we are in the flow of, we can say, this LPG, liberalization, privatization, and globalization, which is uncontrollable. So many people would like to say we are against the globalization and we have to think about the localization. Agree? But the youngsters, young generation is not willing to stay back in a rural area because they fail to identify the scope in agriculture. They are moving, they are migrating from rural area to urban area. And for them, we professors, we teachers, we as a guide, we need to be good with the few of the aspects of understanding, like personal growth, which is a need we have identified, critical thinking, which is a need we have identified, and understanding about the real world skills. So we can develop a plan which will give them a scope where they can gel or where they can locate themselves. Now come to the point 3. Work emphasizes the holistic development of students through innovative learner-focused strategies. Again, our syllabus sometimes is not reviewed properly, maybe after 5 years, or maybe as per the demand of the organizations, or you can say the industries. It is not well framed. Demand and supply is very poor picture, and that's why whosoever is doing a diploma, whosoever is doing a ITI, or whosoever is doing a qualification as BTech, they are just doing their jobs. There, they are lagging with the innovative approaches. They could not think at an experiment level. They could not think at a demonstration level. They could not think at a startup level. They would like to just say that I would like to have a job, and they are doing the jobs from morning to evening. And they are working in the shift with the package like 9 lakh, or maybe a package announced by the IT sector companies, 11 lakh, yeah, up to the 12 lakh. There are exceptionals, but routine level, this I would like to share the picture. So they are getting frustrated. So if suppose after 12 standard, that is also too late, because I guided 16 students from abroad and they were very eager to select the research. And our students are not that much eager to do a research. So this is what is a huge gap between demand and supply. So learner-centric approach all the time doesn't mean that we have conducted an activity or we have conducted a particular celebration. Now today, Kojagiri Purnima, so just let us play Dandiya and that will contribute in a personal growth. Yes, the socialization will be there. The social environment on the campus will be healthy. That is essential.
but how much, to what extent we have to be with such a type of activities. So lot of planning, lot of field exposure is essential for a learner-centric education. Sir, second slide, please. Thank you. Student engagement activities, active participation in learning, focusing on interactive methods. When student will read, will be with a proper some assignment, will conduct a presentation, will give his own thoughts to it, then and then it will be possible to do so. He has to be with a proper planning of that assignment, and it could be a online effort. Means his assignment will be, if suppose the planning which you have developed, then will get accepted, otherwise it will be get rejected. Such a type of mechanism, if suppose will develop, then the compulsion whichever is invited will be enjoyed by the student community, because they will come to know, if suppose we will not work rigorously, then we may not able to achieve the points. Now, personalized learning, tailoring the education to individual learning styles and passes. So personalized learning, here we could frame the group conferences and individual conferences. That will also fall in a collaborative learning also. Student, few of the student will be allotted, number of students will be allotted to the faculty members, like one faculty, 12 students. And in that, they will discuss the difficulties. They will think about the planning they would like to do. If suppose this will happen, then more and more attachment amongst the student teacher will also be there, and whatever their difficulties, those difficulties will be attended. So what is essential? Some kind of mechanism has to be developed. That could be individual conference we can call, or that could be a group conference we can call. From group conference, they are learning peer, that in that group conference, peer-based learning is happening. Peer-based learning, they are learning from each other. I would like to share a real example which is happened in my group conference. One of the student who was suffering from TB, tuberculosis. He said, Madam, I fail to understand whatever you are guiding us, and I am not interested now because of my health issue. So I said, what help I can offer? He said, you give me the questions, and those questions I will try to attend. Will go to the field agency organization, which we call as a agency, and those questions I will attend. I will make my observation against those questions. I said, okay, no problem. I encourage the rest of the student to provide the questions on spot. So near about 30 questions we have handed over to him. Again, his interest was developed because his friends, his classmates were supportive. So it happens 3 times, and he completed his education. So sometimes student on his own or on her own are willing, but there is a gap. We are in a hurry, they are in also hurry. We are in a hurry to complete the syllabus, they are in a hurry to visit the library or finish the assignments. So this is what is happening. So somewhere else, we need to develop such a mechanism in that they will get absorbed, and the compulsion will be there that they have to think. They cannot escape from it. Emphasizing group projects. 3 students coming together, 5 students coming together can do a group projects. But for that, we have to develop a guideline, and that guideline will help them to furnish the data against that guideline. So they will not do the copy paste. Then about the critical thinking. Encouraging students to analyze, evaluate, and create solutions to real world problems. Here, if suppose, this is my personal opinion, if suppose we will show them few of the movies or documentaries, then from that, they will derive a conclusion. And then we have to encourage them to reflect critically. If this could be the situation, what could be your opinion? If this could be the situation, what could be your role? So such a type of 3 attempt
or such a type of very few attempt, at least 2 attempts, will help them to get sensitized with the critical thinking. We can also give a case studies to them. That is possible in almost all the subject, in science, as well as in commerce, as well as in social science subject. In all 3 disciplines, it is possible to provide a case studies. I know in one of the institute of Vellore, the case study was running in a 70 pages. I conducted the class for a group 45 to 55. And the expectation for them was to think on a 70 pages case study. So the expectation, if suppose we will keep high, they will definitely will come into the stress or pressure of that assignment. But the compulsion will be that they will come to you and would like to know what are the expectations. When they will come to you and would like to know what are the expectations, that time the communication get established, and that is what is the essentiality in the learner-centric approach. We need to be with them, and the discussion or the communication has to be established with a ways, various ways. Sir, next slide, please. Thank you. Focus on youth empowerment. Emphasizes youth empowerment through education that develops both intellectual and emotional capabilities. We all are aware about IQ, intelligent quotient, then EQ, emotional quotient, then SQ, the spiritual quotient. Nowadays, there is one more fourth one, that is the AQ, means adversity quotient or adaptation quotient. So this adversity or adaptation is important, I would like to say. In various life situations, we have understood that all are not at an equal level. Even in our family also, we all are not at an equal level. Then what is important? The adaptation is important. मला इथे मराठीमध्ये बोलण्याची थोडी संधी द्यावी असं मला वाटतं. प्लीज मॅडम. हा, माझं एक पुस्तक पब्लिश आहे, विशेष ऋतुरंग. विशेष ऋतुरंगाचा मध्ये मतिमंदांच्या समस्या, कारण मी गेल्या 30 वर्षापासून दिव्यांगांच्या शाळांमध्ये जाती आहे आणि त्यांच्यासाठी ऍडवायझर म्हणून पण काम करत आहे. तर आज पुण्यामध्ये अशा शाळा किती आहेत किंवा महाराष्ट्रामध्ये अशा शाळा किती आहेत, तर त्याचा नंबर जो आहे तो 200 पर्यंत आहे. ओल्ड एज मध्ये एखाद्या पॉकेटमध्ये किती ओल्ड एज होम आहेत, तर रजिस्टर्ड आणि अनरजिस्टर्ड असं जर पकडलं तर प्रत्येक पॉकेटमध्ये किमान 100 ओल्ड एज होम दिसतात. ही स्थिती, हे जे सोशल एन्व्हायरमेंट आहे, हे आपल्या सगळ्यांसाठी अयोग्य आहे असं आपल्याला वाटतं, आपल्या जनरेशनला वाटतं. पण ही जी जनरेशन आहे त्या जनरेशनला असं वाटत नाही, कारण जॉईंट फॅमिली सिस्टीम मधून न्यूक्लिअर फॅमिली सिस्टीम मध्ये आपण आलेलो आहोत आणि त्यामध्ये अजून परत मला इंडिपेंडंट हवं आहे अशा वातावरणामध्ये ही मुलं बॉर्न अँड ब्रॉटअप झाली आहेत. त्यामुळे आपल्याला या जनरेशनच्या कॅरेक्टरिस्टिक फीचर समजून घेणं गरजेचं आहे. सोबतच आपल्या वर्गामध्ये एखादं मूल जर मागे राहत असेल बिकॉज ऑफ व्हिज्युअल इम्पेअरमेंट, त्याला दिसत नाहीये किंवा ते फिजिकली हँडिकॅप आहे, मेंटली चॅलेंज मूल तर आपल्या क्लासमध्ये नाही येऊ शकत कारण त्यांचा क्लासच पूर्णपणे वेगळा असतो. पण हे दिव्यांग मूल जे आहे, जे फिजिकली हँडिकॅप आहे किंवा व्हिज्युअली इम्पेअर्ड आहे, दृष्टीबाधित आहे, ते मूल मात्र वर्गात असू शकतं. मग त्यांच्यासाठी आपण काय विचार करतोय, तर हे अडॅप्टेशनचा विचार जास्त करावा लागणार आहे आपल्याला. कारण पूर्वी वर्गामध्ये म्हणजे दिल्लीवरून लोक आलेली आहेत असं नव्हतं किंवा आंध्र प्रदेश साऊथ मधून येतात आहे विद्यार्थी असं नव्हतं. आता विद्यार्थी काय होतात आहे, वेगवेगळ्या लोकेशन वरून येतात आहे. त्यांना जिथे ऍडमिशन मिळते आहे त्या जिल्ह्याला जाऊन ते स्टडी करतात आहे. त्यामुळे तिथलं जे वातावरण आहे ते त्यांच्यासाठी नवीन आहे आणि त्यामुळे त्या वातावरणासोबत जर ते समरस होऊ पाहत असेल तर आपल्याला तिथे पण त्यांना हेल्प करावी लागणार आहे. त्यांचे वेगळे प्रश्न असू शकतात, त्या प्रश्नांना आपल्याला अटेंड करावं लागणार आहे. तर आपल्याला इमोशनल कॅपॅबिलिटीजचा पण विचार करावा लागणार आहे. फक्त त्यांच्याकडे IQ आहे, त्यांना 70-90 असं टक्केवारी मिळालेली आहे, त्यामुळे त्यांचं सॉर्टिंग झालेलं आहे. सॉर्टिंग मधून ते आपल्या क्लासमध्ये आलेले आहेत
पण बऱ्याचशा पुष्कळशा अशा गोष्टी आहेत की ज्यामध्ये त्यांनी पार्टिसिपेट होणं अपेक्षित आहे. दे आर विड्रॉल्स. दे आर नॉट रिलेटिंग विथ अस. they could not communicate with us. They are not coming forward. हे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आपल्याला त्यांच्यामध्ये दिसतात आहे. मग आपण आपल्या क्लासरूम सिच्युएशन मधून किमान एक 10 मिनिटाचा वेळ जर आपण जे अप्रोच डिस्कस करत आहोत, यू मे बी मोर इनोव्हेटिव्ह दॅन मी, जे आपण अप्रोच डिस्कस करत आहोत त्याचा जर आपण आधार घेतला तर स्लोली अँड ग्रॅज्युअली मला असं वाटतं हे सगळं आपण अचीव्ह करू शकू. इन द बिगिनिंग ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड, मे बी इन अ फर्स्ट इयर मोर. पहिल्या वर्षाला या सगळ्या गोष्टींची जास्त गरज असते. वन्स दे गेट सेटल देन दे फाइंड आउट वे ऑन देअर ओन. ते अल्टरनेटिव्ह सर्च करत राहतात आणि मग ते एस्टॅब्लिश होतात आणि आपल्यापासून ते थोडं दूर होऊन गोल ओरिएंटेड होतात. दिस इज व्हॉट इज हॅपनिंग विथ द यंग जनरेशन, विथ द यंग स्टुडंट्स. What we have to do? Focus on their self-confidence, leadership, and initiative. See, we all knows that appreciation works. कौतुक हे केलंच पाहिजे आणि कौतुक केल्याने ते पुढाकार घेतात आणि इंटरेस्ट घ्यायला लागतात. Recognizes that academic success must be balanced with emotional intelligence and social skills. We all know that social skills are very important. सगळे जे काही सोशल स्किल आहेत त्याच्यामध्ये वर्क हॅबिट्स पण आहेत आणि त्या जर या विद्यार्थ्यांच्या डेव्हलप झाल्या नाहीत तर दे कॅनॉट बी ॲट अ हायर पोझिशन. लाईक दे यू कॅन टेक अ एक्झाम्पल ऑफ द डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट इन्चार्ज, क्लासरूम ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर्स, ओके, और प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, अशा ज्या की पोझिशन्स आहेत त्या पोझिशनमध्ये सगळीकडे सोशल स्किल लागतात आणि इमोशनल बॅलन्स पण लागतो. मग हे सगळं कुठून येतं तर दिस इज व्हॉट इज ऍक्च्युअली टेकिंग प्लेस ड्युरिंग देअर ग्रॅज्युएशन पिरियड. त्यांच्या तरुण वयामध्येच या सगळ्या गोष्टींचा समतोल साधणं अतिशय गरजेचं आहे. अँड दिस इज अ पाथवे फॉर youth development, I would like to say. आणि हा पाथवे मला तरी असं वाटतं की आपल्या सगळ्यांना नोन आहे. फक्त वातावरण निर्मिती जी आहे सोशल एन्व्हायरमेंटची ती करणं आपल्याला अतिशय कॅटेगोरिकली अत्यावश्यक झालेलं आहे. आणि आय एम व्हेरी हॅपी दॅट दिस टॉपिक इज इन्क्लुडेड because this topic is in a psychology subject or in a sociology subject or in a other human subject related to the behavior science. Rest of the disciplines are not touching directly to this subject. So somewhere else this is a essential component as emotional skills and the social skill. Sir, next slide please. Now just let us move to the use of media for learner-centric approach. The schools are encouraging to use the mobile handset. The colleges are using it. We all are using it. But in spite of that, whenever there is, we would like to say, n number of information is available, then why the students are not up to the mark? Or why, I will directly touch to the subject, why they are committing suicide, why they are not able to handle the stress, why they could not deal with the difficult people or difficult situation, what makes them to be withdrawal and what make them to commit a suicide. तर ही जी निराशा आहे जीवनामध्ये येतीये ही गोल ब्लॉक झाल्याने येतीये हे त्यांना कळतंय. पण जेव्हा आपले गोल ब्लॉक्स होतात, आपल्या आयुष्यामध्ये अडथळे येतात, तर त्यामध्ये दे कुड नॉट एबल टू रिस्टोर देअर कॉन्फिडन्स इन अ पॅरेंट्स, इन अ सोसायटी. There we can take an example of the relatives or in a teaching community. So here is the failure of our society that young generation nowadays it is not in properly link with us. आपल्यासोबत हा तरुण गट मोठ्या प्रमाणावर चांगल्या प्रकारे हव्या त्या अपेक्षेमध्ये जोडल्या गेलेला नाहीये, तो आपल्यापासून दूर जातोय. तर याची कारणं काय असू शकतात? सो वी नीड टू अनालाइज इट अँड वी हॅव टू बी विथ अवर ओन इनोव्हेटिव्ह काइंड ऑफ प्लॅनिंग. दिस इज व्हॉट इज
I would like to say each professor can do a planning. Means I would like to say I don't have a liberty on my campus, but I have a liberty in my classroom. No one will dare. Whatever I am deciding, that I would like to, that way I would like to conduct the class. सो क्लासरूम मध्ये आपल्याला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे आणि मला असं म्हणायचं आहे की त्या क्लासरूम मध्ये आपण खूप इनोव्हेटिव्ह प्रकारच्या एक्सरसाइज कंडक्ट करू शकतो, ज्या मुलांना, तरुण मुलांना आत्ताच्या आवडतील आणि त्यामधून आपला स्टुडंट टीचर रॅपो जो आहे तो चांगल्या प्रकारे एस्टॅब्लिश व्हायला मदत होईल. आणि हा जो विषय आहे आपला आजचा लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, हा आपल्याला हाताळायला सोपा जाईल. Social environment is very essential on campus. A student-friendly environment is very essential on the campus. Understanding about the gender issues is very essential on the campus. Attitude, positive attitude towards both the gender is very essential on the campus. Nowadays, we are coming across with so many cases which we don't like to listen, which we don't like to watch. But the reality is that this is what is happening at a school, at a college level or outside. हे घडतंय. मोठ्या प्रमाणावर लैंगिक अत्याचाराच्या केसेस वाढलेल्या आहेत. सेक्शुअल व्हायोलन्स वाढलेला आहे. अशा प्रकारचं बिहेवियर का आपल्याला दिसून येत आहे? का मुलं गोल ओरिएंटेड नाहीयेत? आई वडील खूप मोठ्या प्रमाणावर त्यांची फी भरतात आहे. चांगले वेल नोन कॉलेजेसमध्ये त्यांच्या ऍडमिशन्स आहेत. टीचर्स आर विलिंग टू सपोर्ट देम. मोठ्या प्रमाणावर लॅब चांगले वेल एस्टॅब्लिश आहेत. मोठ्या प्रमाणावर इक्विपमेंट्स प्रोव्हाइड करायला पॅरेंट्स आणि टीचर रेडी आहेत. In spite of that, why they are not coming forward and they are more indulged in the use of videos, podcasts, interactive simulations to make learning on their own. So we are becoming secondary. What is happening? We are becoming secondary. असं होता कामा नये यासाठी आपल्याला हा जो मीडिया जो पूर्वी नव्हता पण आता तो मोठ्या प्रमाणावर सगळ्या गोष्टी चॅनलाइज करतो आहे, तर आपण त्याचा सुद्धा व्यवस्थितरित्या उपयोग करून घ्यायला शिकलो पाहिजे. All colleges are conducting a activity of NSS. NSS ची ऍक्टिव्हिटी सर्व कॉलेज कंडक्ट करतात. या NSSच्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये आपण जनरली आपल्या एरियाला रेस्ट्रिक्ट राहतो. लाईक सपोज अमरावती असेल तर मेळघाट किंवा त्या आजूबाजूची जी काही खेडी आहेत त्या खेड्यांपुरता आपण रेस्ट्रिक्ट राहतो. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आपण एका पर्टिक्युलर पॉकेटमध्ये विचार करत असतो. ते आपल्याला बजेट पॉइंट ऑफ व्ह्यू अप्रोप्रिएट वाटतं. पण if suppose our management is willing to cooperate, the students are also willing to coordinate, and if suppose sponsorship is also there, though individual donors are there, significant members in the community in that particular village or in that particular district willing to support, administration is also willing to come forward, then why we should not go out of the box? तेव्हा आपण जेव्हा मुला मुलींना घेऊन बाहेर पडतोय तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर चलबिचल झालेली असते. they were under discussion, then they go under the stress, then they talk with the teacher, then the interaction among the students and the teacher increases. So this need to be increased. We need to be a good coordinator to balance all these things, and that will help us to be learner centric. All the time the teaching is not happening in the classroom. If we will take them out, there also lot of interactions are possible and the student will come to close and they will have a positive mindset
about the surrounding or about the future career. Here I would like to share one example. My specialization is human resource management. So my students are experiencing a well-established kind of organization structure where the communication and instructions are very much correct. The flow of communication is excellent in the industry. Majority of the students are placed in a multinational companies. What I do, I have taken my student to the MP for industrial study tour. There, I selected one NGO which was working on occupational health. Occupational health is a concept which is having 100% demand in abroad, but in India, it may be at a negligible level. With authentic data, this I would like to comment. The pocket selected was a tribal region. There, the Tata Institute of Social Science was already visited, and the same pocket we planned to visit. That was a MP border, and from other side, it was a Gujarat border. And we were in between. So the death toll in that village was 250. 250 लोक त्या खेडेगावामध्ये मृत्यू पावली होती. मी स्वतः पाहिलं की 7.5 फूट 7 फूट उंचीचा माणूस, त्याला माहिती होतं की 5 वर्षांनी आपण या जगात नसणार आहोत. हॅलो, हे जे चित्र आहे हे कोपअप करणं जर माझ्यासारख्या प्रोफेसरला कठीण जात असेल तर विद्यार्थ्यांना पण ते कठीण गेलं. फूड स्टाईल वॉज टोटली चेंज. पूर्णपणे जेवणाची पद्धत बदललेली होती. अँड वी हॅव टू डू अ लॉट ऑफ ऍडजस्टमेंट ओव्हर देअर when we listen the issues in that area of Gujarat state and MP state, the student become very much interested in the studies. They have taken this study in their syllabus and the assignment they have completed on it very with a holistic view. असं घडू शकतं, but for them, we have to take them out. This is what is I would like to say for to be away from the our मोबाईल. कारण तिथे रेंजच नाहीये. तिथे आपण काही एरियामध्ये गेलो की तिथे रेंजचे इश्यू तयार होतात आणि मग मुलं रेंजचे इश्यू झाल्यानंतर आपल्याकडे टर्न अप होतात. तर दिस नीड टू बी हॅपन. देन कम टू द व्हिज्युअल लर्निंग. Infographics, images, diagrams cater to visual learners, making complex ideas easier to understand. So nowadays, it is very much possible to learn with this aspect, and that also do create a interest. Now come to the another point. I am focusing more on a psychosocial aspect, which are more with the personality development component. Okay, because we all are rest of the information we all know. All colleges, not a single college is. I would like to say is away from the student activities. Almost all colleges are conducting a student activities. Few of them are with a yoga, with a properly check out plan of NSS, and students are enjoying. But when they come to the Pune or when they go to the Mumbai, that time they feel left out. That time they do feel left out because they may not have experienced the social environment of that particular city. So visiting the places is also a one kind of education. Now come to the point, personalized learning. Adaptive learning platforms. Technology can offer personalized lessons, quizzes, and feedback based on a student performance. In my one of the point, in the beginning only I said that if suppose industry college interface will be increased, like Sipna College of Engineering. I was supervising Cummins. Cummins is in Kothurud, Pune. And just I have asked them, ki, sir, I would like to know the percentage of engineers from Vidarbha region. So they said, madam, why to worry? You can say 95% population is from Vidarbha. Oh, I say it's great. So then I have gone through that list. So Amravati were at the top, Akola were the top, because engineering colleges are more, medical colleges are more. Amravati is a city. I do feel proud of this city because I belongs to this city. It is a city where the educational institutes are very good. But what about the industrialization? The industrialization is very poor. Water is there, but still
A cash crop cotton is there, but still the industrialization couldn't take place. This is what is happened. We will not go into the reasons behind it, but we all know all our kids are moving from Amravati, Akola, even from Nagpur to Pune. We are concentrated in Pune. So this is what is happening. So what about their lifestyle nowadays? What about their career goal nowadays? When they are joining in the company, they are sitting on the bench of the worker. We are lucky that way that we are enjoying a stable positions. But what about our kids? So this need to be thought properly in a learner centric approach. तो कोणाचंही मूल असो, त्या विद्यार्थ्याला चांगल्या प्रकारच्या संधी कशा उपलब्ध होतील आणि भावी जनरेशन हे गोल ओरिएंटेड आणि करिअर ऍस्पायरिंग कॅन्डिडेट मध्ये कसं येईल ह्याचा विचार नक्कीच व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं. नाऊ कम टू द पॉइंट. Personalized learning, adaptive learning platforms. Technology can offer personalized lessons, quizzes, and feedback based on student performance. We all know that nowadays at workplace, prevention of sexual harassment at workplace is a compulsory committee. Okay, at a college level also. At a college level also. Now, whosoever is the responsible faculty, that faculty has to be with a proper Vidyarthini Manch or proper the awareness session. हे घेतले पाहिजे. वर्षातनं 3 वेळा तरी सेशन घेतले पाहिजे. व्हॉट इज मीन बाय पॉश प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट ॲट वर्क प्लेस. व्हॉट इज द ऍक्ट हे घेतलं पाहिजे त्यामध्ये. आणि व्हॉट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टुडंट. अशा प्रकारचे डिस्कशन्स क्विजेस मधून घेता येऊ शकतात. त्यावर फीडबॅक घेतला जाऊ शकतो. अँड देअर ऑल्सो वी विल कम टू नो व्हॉट इज हॅपनिंग इन अ स्टुडंट कॅम्पस. आपल्याला तेव्हा कळून चुकेल की त्यांच्या मनामध्ये काय चलबिचल चाललेली आहे आणि आपल्याला त्यांना पुन्हा एकदा नव्या नागमोडी वळणातनं लर्नर सेंट्रिक अप्रोचकडे घेऊन जाता येऊ शकतं. ओनली टेक्नॉलॉजी इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस. आपलं जे कंपोजिशन आहे, आपलं जे कॉन्स्टिट्यूशन आहे, त्यामध्ये आपलं बिहेवियर, आपलं सायकोलॉजी आणि सोशोलॉजी, आपण ज्या हेरिडिटी मधून आलो ती हेरिडिटी आणि आपण ज्या सोशल एन्व्हायरमेंटमध्ये आता राहतो आहे ते सोशल एन्व्हायरमेंट हे सगळं मॅटर करतं फ्युचर करिअरसाठी. तर या गोष्टी अतिशय महत्वाच्या आहेत. नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट. Learning management system provides students with the ability to access content at their own pace, anywhere, anytime. Yes. But do that is integrated? Do the access is there? तर या प्रश्नाची उत्तरं थोडी असमाधानकारक आहेत. काही प्रोफेशनला ऍडमिशनचे प्रश्न आहेत. काही प्रोफेशनमध्ये कॉलेजेसमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय की कॉम्प्युटर लॅब नाही आहेत. काही ठिकाणी त्यांना ट्रान्सपोर्टचे इश्यूज आहेत. देर आर मेनी मोर इश्यूज which we professors or which we teachers are not looking at it. मग ते आपले आहेत का? तर ते आपल्या सर्वांचे आहेत. ते तुझं आणि माझं असं करून चालणार नाहीये. स्टुडंट हे आपले आहेत आणि
Hello, sir, can you hear me? Yes, madam. Thank you, sir. Sir, next slide, please. We will go to, yeah, thank you, sir. Collaboration and communication. आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी, लाईट गेले तिथे म्हणून इंटरप्शन झालेलं मध्येच. कोलॅबरेशन अँड कम्युनिकेशन, social media tools. Platforms like discussion forums, blogs, and class social media groups promote collaborative learning and peer interaction. So nowadays we can use that Google form, and with the help of that, we can have a sample survey. We can encourage the student to write blogs. आपण प्रवास वर्णन त्यांना लिहायला सांगू शकतो. विनोदी स्थितीचं सिच्युएशनचं काही कॉमेडी त्यांना लिहायला सांगू शकतो. आणि सेन्स ऑफ ह्युमर आपल्यामध्ये असणं गरजेचं आहे हे सांगू शकतो. काही डिस्कशन फोरम्स, सबग्रुप्स फॉर्म करू शकतो आणि त्यावर आधारित त्यांना काही केस स्टडीज देऊ शकतो. तर हे करणं अतिशय गरजेचं आहे. देन अबाउट द व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग. In 2004, first time I came across with a video conferencing in Yeshada. They have connected us with Mantralaya in Mumbai, and we have experienced how we can talk. Now I am used to video conferencing nowadays because industries are having well connectivity for video conferencing. Whenever I go as a committee member, the four rest of the companies are getting connected. For Pan India also, I am connecting with all over India. So nowadays it is very common. But do you think that the students are well aware about all these things? Because of the corona, they are well aware with the Google Meet. But rest of the things they have not yet mastered. So if possible, at least once in a year, if we could plan to do such a type of activity, then they will be excel in any state of India or anywhere in the world. This is what is I would like to say, because they will their memory, we are in their memory, and that memory lead the life. आपल्या आयुष्याला वळण देणारं एक मोठं काम ही मेमरी करत असते. आणि मला असं म्हणायचंय की आपण शिक्षकांनी ती सांभाळावी. म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मनात तर आपण जाऊ शकत नाही, कारण खूप सारे लाईक्स आणि डिसलाईक्स ऑपरेट होत असतात, टू बी ऑनेस्ट अँड फ्रँक विथ एव्हरीवन. पण काही विद्यार्थी, काही मुलं आपल्याजवळ यायचा जेव्हा प्रयत्न करत असतात, तेव्हा मात्र आपण त्यांना आपल्याकडचं विद्यादान हे दिलंच पाहिजे, आणि आपण ते देत असतो. Access to real world content, current events and news platforms, websites, news apps, and educational YouTube channels bring real world issues into the classroom, making learning more relevant. Now again, what's happening? You can be agree with me that they would like to read a newspaper in their mobile. त्याच्यावरच वाचायचं. They find it very comfortable to go into the news app. त्याच्यामध्ये जायचं. वेबसाईट, they find it very easy. And few of the institutions are having their own YouTube channel also. So they are not with the print media. म्हणजे आपला जो न्यूजपेपर आपण लहानपणापासून हाताळलेला आहे, तर या जनरेशनच्या हातात तो कमी दिसतोय. सो इफ सपोज वी विल डू अ क्लिपिंग फाईल, आपण जर त्यातले न्यूजपेपरचे आर्टिकल्स कट केले आणि ते क्लासमध्ये ऑन स्पॉट त्यांना वाचायला दिले, आणि इफ सपोज वी फॉर्म अ ग्रुप, समटाइम्स वी गेट अ व्हेरी गुड अपॉर्च्युनिटी नाऊ ऑन संडे, अँड टुडे ऑल्सो द एक्झिबिशन फ्रॉम इस्रो इज गोइंग ऑन इन पुणे. मग ते इस्रोच्या एक्झिबिशनला सायन्स स्टुडंट जाऊ शकतात, किंवा हवामान दिवस असतो तो सेलिब्रेट ते करू शकतात. मग त्याच्या संदर्भामध्ये क्लायमेट चेंजच्या संदर्भामध्येच मोठ्या प्रमाणावर सध्या फंडिंग अवेलेबल आहे ऑल ओव्हर द वर्ल्ड, आणि तो अगदी बजवर्ड झालेला आहे. तर क्लायमेट चेंजच्या संदर्भामध्ये आपण डिस्कशन करू शकतो. आत्ताच नुकतंच अमरावतीच्या काही भागामध्ये अर्थक्वेकचं सेटबॅक झाल्याचं न्यूजमधून कळलंय. तर अर्थक्वेक म्हणजे नेमकं काय? तर हे फक्त जिओग्राफीचे स्टुडंट स्टडी करतील का? इव्हन द फिजिक्स स्टुडंट ऑल्सो कॅन डू अ स्टडी अबाउट इट, असं मला म्हणायचंय. अँड देअर द सायकोसोशल ऍस्पेक्ट इज ऑल्सो इन्व्हॉल्व्ड. हा सायकोसोशल ऍस्पेक्ट जो आहे, याला वगळून लाईफ नाहीये.
कारण अर्थक्वेक झाला तर त्याच्यामध्ये ह्युमन लॉस, प्रॉपर्टी लॉस, कॅटल लॉस अशा सगळ्या गोष्टींचा आपण विचार करतोच. ती फक्त जिओग्राफिकल इव्हेंट आहे असं म्हणून आपण तिला सोडून देत नाही. तर मला असं म्हणायचं आहे की पॉसिबिलिटीज, opportunities are much more. It is we have to think about it. Then about the digital libraries and open educational resources. In Mumbai or in a metro city, students are well conversant with this aspect. Not in Pune also that much. Nowadays, the students are enjoying the e-books also, but that number is very less. So whatever option you would like to select and whatever option is suitable to your discipline, we have to think for a learner-centric approach or developing the learner-centric environment on our campus. Sir, next slide. Now, gamification of learning, educational games. Lot of games are available and we have to learn. During our syllabus time or educational period, we were not using it. At that time, gathering was there and quiz competitions were there, essay competitions were there. But the young generation characteristic feature, we have to take a note of it and has to line up our classroom or has to line up our activity accordingly. Otherwise, they will be withdrawal. They will not take the interest. Sir, next slide. Ethics and value building for learner-centric approach. In the beginning, I said lot of information is available, but what about the ethics and value building? That is missing. Bluntly, I would like to comment this. रिस्पेक्ट म्हणजे काय असं विचारल्यानंतर खाली वाकून नमस्कार करणे याला रिस्पेक्ट म्हणतात. दिस वॉज द आन्सर. रिस्पेक्ट म्हणजे जो फरक आहे तो ओळखून त्याचा आदर करणं. ते या पिढीमध्ये येणं फार कठीण आहे. कारण त्यासाठी ते स्वतः हेल्पलेस आहेत. दे आर हेल्पलेस. वाय? बिकॉज सराउंडिंग इज नॉट अवेलेबल. लेक्चर मेथड मधून हा येणार नाही. हा पार्टिसिपेशन मधूनच येऊ शकतो. जर आपण NSSच्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये श्रमदान करायला लावलं तर दे विल मेक अ फन ऑफ इट. दे विल एन्जॉय द ऍक्टिव्हिटी, बट दे मे नॉट अंडरस्टूड द इम्पॉर्टन्स ऑफ लेबर. हे नेमकं काय आहे, यामधून आपल्याला काय शिकायचंय? बिकॉज दे हॅव नॉट डन. दे नो द पार्किंग. त्यांना अंगण हा शब्द माहिती नाहीये. त्यांना पडवी हा शब्द माहिती नाहीये. त्यांना तोरण हा शब्द माहिती नाहीये. लॉट ऑफ व्होकॅब्युलरी इज मिसिंग बिकॉज दे हॅव नॉट एक्सपिरियन्स. त्यांना पार्किंग माहितीये. पार्किंग मध्ये तू जाऊन खेळ. तू पार्किंग मध्ये जाऊ शकतो. सो देअर व्होकॅब्युलरी इज टोटली चेंज. सो दिस इज अ चॅलेंज फॉर आवर जनरेशन ऑल्सो. आपल्या टीचिंग कम्युनिटीसाठी हे एक मोठं आव्हान आहे असं मला वाटतं. We would like to respect the senior and would like to say ma'am, sir, basa. But their language is different. They would like to call by first name. Their generation is asking, you have to call me by my nickname. So this is what is happening. Everything is change. And we have to take cognizance of this change. The change is a constant factor. Now come to the point. Promoting integrity and accountability, ownership of learning. By giving students more control over their learning, they develop a sense of responsibility for their progress and actions. I would like to share one example for the point number 2, encouraging respect and empathy. Assignment I have asked them to do on emotion management in psychology subject. So one of the students said, ma'am, I am a single parent child and I am residing with my mom. She is a IT engineer and we have a doggy at home. So is it okay if I will do the assignment with my dog? I said, okay, no problem. So he became emotional first. And I said, why are you becoming emotional? I agree
and whatever plan you would like to develop, I haven't have any question on it. So what happened with you? So he said, ma'am, I'm so happy that you agree. I said, it's okay. No problem, no issue. Bring your dog in our class. So when the dog was in the class, that time all 60 students were very cheerful. Very cheerful. Ma'am permitted, and the student is with the dog, and how the assignment will be now. So he explained about the situation, life situations, and what is meant by unconditional love, and the various types of emotions, which he learned from the dog, that he would like to say, because his mother don't have time. What is meant by being happy? What is meant by sorrow? So many things. Since his childhood, he was with that dog. Now he is at a top position. So these are the internal, integral parts, situations of our life which need to be taken care of. This is what is we would like to say. Our career revolves around this situation actually. Just being with the degree is not going to help us. One of my student was from BTech and HR. So the HR manager said, Madam, from application bank, you please remove engineering background student. I said, why? They would not like to talk and they are not interested in people management at all. They are with the machine. They are with their subject only. If such a type of attitude is going to be hold, then what will happen with the future generation career? It is we have to help them to get socialized with the social environment. Then and then they will feel equipped, or they will get a good understanding about the social environment, because wherever we go, we are going to come across with the people. At least here in India, technology do dominate us since morning, but wherever we will go, we are going to experience the group, and our students need to tackle all these situations. So this is what is the learning centric, learner centric approach. Now come to the point, honesty in assessments. Encouraging honest self-assessment and reflections fosters integrity in academic work. What is happening? They are appearing for the exam and we are doing a paper checking. There is no scope as such for two-way communication. But in the practical, there is a scope for two-way communication. In the Vivaos, there is a scope for two-way communication. Or in the unit test, even there also we could develop a scope for self-evaluation or two-way communication. So we need to develop a scope. This is what is I would like to say. In our practical, we have to give 100 marks. So we have developed a form, evaluation form, which is filled by the managers of the company and by the supervisors, means we faculty member. Then we are conducting an average of it. So in that first, I would like to ask the student how much score, what you are thinking about your rating. So he would like to say, ma'am, I would like to be with the 80 marks, 80% marks. I said, why? Give justification for it. Or in each bracket, you called the marks and let me know why you have called it 10, 15, 25. Let me know. If such a type of communication will be there, then the transparency will be there. So I would like to say there may be a minimal scope for this, but we have to exercise somewhere else, whatever it is, we have to exercise. Now for us, we have a scope of 100 marks. Rest of the examination pattern, we cannot do it. But in 100 marks, we can do it. So I would like to say that will help in ethics and value building in our environment, teaching learning environment. And that will also build up respect for we teaching faculty. Okay. And we will also learn with sympathizing and empathizing also.
sometimes we seniors do get lost. We also need to be trained. We also need to be guided. We also have a essential training on soft skills. आपल्याला पण सॉफ्ट स्किलचे ट्रेनिंग गरजेचे आहेत. आपल्या लहानपणी कीर्तन नावाचा एक प्रकार होता आणि त्या कीर्तनाला लोक जायची आणि परत वारंवार ते कीर्तन ऐकल्याने व्यवस्थितरित्या मनाचा समतोल सांभाळायला ते लोक शिकत होते. आपल्या वेळेस असं काही नाहीये. काही काही लोक अजूनही ऐकतात रेडिओ, टीव्ही, मोबाईल्स याचा उपयोग करतात. पण हे मुलांसाठी नाहीये ना. ते त्याचा उपयोग करत नाही बिकॉज दे आर डिलिंग फ्रॉम द पॅरेंट्स. ते शिकायला दुसऱ्या जिल्ह्यात गेलेले आहेत. आणि ते आता वेगवेगळ्या पातळीवर त्यांच्या तऱ्हेने शिकतात आहे. मग मला असं म्हणायचं आहे, की पुन्हा एकदा ही जी संस्कृती आहे, कल्चर आहे याचा आढावा घेणं आपल्या पातळीवर गरजेचं आहे. आपल्याला जर हे सगळे एफर्ट सस्टेन करायचे असतील चांगल्या प्रकारे आणि ते इम्प्लिमेंट करायचे असतील, तर आपले डिस्कशन्स हे व्हायला हवेत. वेगवेगळ्या मेथड्स, व्हेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स, various types of techniques we need to adopt, like conducting a program on conflict management skills is very essential for 11 standard students or for any student. Throughout the year, one program could be there, conducting discussions on goal setting. So here, what is happening now? With me, three students are there. I am a mentor for 3 students. 2 are from engineering background and 1 is from MBA background. So I am a mentor for them. So actually, sometimes I do learn from them because their discipline is different. So I am guiding them for emotion management. I am guiding for conflict management. I am conducting a session for goal setting. And from that, lot of discussions are happening. Madam, I would like to discuss this with you if you don't mind. I said, okay, no problem. So I am listening. And when I am listening, I also came to know I am also growing. Arey, I have not thought about this difficulty. So two-way communication is very essential, and our involvement or when we relate with that situation, it will help us. It will help the student community. It will help the future generation. Okay. So the individual behavior and the group behavior need to be reshaped properly as and when required. Now about the service learning, that point we have already discussed. So this community service project promotes empathy. We are more with the sympathetic approach, but empathy also has to be there. Sir, do we have a last slide? Next slide, sir. Developing critical thinking with ethical awareness. Sir, before that, acha. Developing critical thinking with ethical awareness, decision-making skills, activities like debates, ethical dilemmas, and role-playing exercise help students analyze situations from an ethical standpoint. Now, sometimes the student would like to perceive that manipulation is good. Few students are good in manipulation, few are not. Few students are good in understanding the situation, few students could not grasp the whole situation in a more correct manner. So they could not be with the decision-making skills. So we have to put them in a various activities like debates, or we have to select such a sentence where ethical dilemmas will be there. Role-playing exercise help the student to analyze the situation from an ethical standpoint. And we all are doing this. One group will be management, another group will be trade union. Both of them will be sit together for a wage settlement negotiation. And we encourage the student, read the case study and do a role play. There they may be fail, but in future they remember, this I have done during my college days. This is what it is. And they associate that memory with their future career life. So this need to be happen. Then one more statement we can give, like myths and realities. There are many more statements about myths and realities, and which can be applicable to all the subjects, science, commerce, and social science also.
ऑल हॅपी वर्कर्स आर प्रोडक्टिव्ह वर्कर्स. जे सगळे खूप खुश आहेत कामगार वर्ग, ते सगळे प्रोडक्टिव्ह आहेत का? कार्यक्षम आहेत का? So some of the student will say yes, some of the student will say no. They will listen each other, will provide the justification, and from that the vocabulary will develop, the confidence will develop, and they will start liking it. They can able to cross check their thought process also. This need to be happen then, and then they will grow in their career, and then they will start learning. One should know how we learn. One should know how we learn. Reinforcement is very essential in learning. So sometimes the students could not understand in what way or what could be the best way to do a learning. Now about the media literacy. Teach students to critically evaluate media and information sources, distinguishing between fact, opinion, and bias. I would like to say the student community, which is very fresh, but we do come under the peer pressure, influences, or we do get carried by all these things. So this is happening amongst them. And media is one more additional in it. So whenever there is any concept which will give us the scope to explain the discrimination, the stereotype, or the biases, or the negative attitude or positive attitude, we will pick up that situation and will help the student to think on it, to reflect on it, or critically evaluate it. Student don't know what is meant by evaluation. Student may have heard about the SWOT analysis, but still they could not able to write a 5 points of what are their strength or what are their weaknesses. They would like to say, I cannot converse in English. This is my weak area. I said, no, you are good in Marathi. Very good, very good. You are going to visit Germany, so you and me don't know Germany. So do we have to say that we are weak in Germany? No, not at all. Confidence matter a lot. Your eagerness, your willing to learn matters a lot. So this way, when we will do a evaluation, when we will do a SWOT analysis, with the help of that, we could restore their confidence, and that is the essential factor in this learner-centric approach. Now about the cultivating leadership and teamwork. Collaborative project like group activities emphasize teamwork, cooperation, and leadership, highlighting the value of working towards common goals. As we all of you know, the cooking, or you can take a example of the freeze, or you can take an example of the washing machine. Now these are the products: freeze, washing machine. These are the products. In cooking also, we will cut onion first. We'll do a vegetable cutting, and then with all this mixture, we will prepare a vegetable. Okay. In the industry, if suppose we will visit a shop floor, that time in the beginning of the manufacturing process, few of the assembly parts will be there, and then we can see a product at the end of the manufacturing process. So this is what is happening. Cooperation is demanded, and with the help of instruction, it is happening because instructions are there, and with the help of that instruction, you have to work. That is a compulsion. There is no deviation from it at all. Zero tolerance for it. So our students fail to understand what is meant by cooperation, what is meant by interdependency. Differences of opinion is going to be there. One will be agree, another will be disagree. But we could not able to give it up. We hold a grudges. And then there starts the problem for the teamwork. And then groups and subgroups do get formed on the campus. And that is not a healthy environment. That is going to be formed. That is natural. This we could not able to inculcate amongst them. Groups and subgroups are going to be there. हे त्यांना आपण सांगितलंच पाहिजे की असं असणारच आहे. काहीही वाईट झालं नाही. ज्यांचे स्वभाव जुळलेत, ज्यांची मतं पटलीत, ते लोक एकत्र आलेले आहेत. Compulsion is that you all are going to be together in my classroom. Now you don't have to choice.
You need to work in a cross-functional team. महिन्याला 50 लाख जर पगार मिळाला तर ज्या व्यक्तीसोबत पटत नाही त्या व्यक्तीसोबत आयुष्यभर पटवून घेणार की नाही कामाच्या ठिकाणी. So very in a assertive way we have to put forth our views and has to help them to understand what is mean by differences of opinion, what is mean by teamwork, what is mean by interdependency and dependency in cooperation, and what is mean by leadership. So all these things will help them to achieve their goals. So work habits, value building is very essential. We are principled. Our socialization, family environment help us to be principled. So that is also very good. And we have to understand if suppose it is reflecting in a student. Now about the integrating ethical themes into curriculum, real world case studies. This we have discussed. Okay, project based learning, encourage students to solve real world problems with an ethical lens. Here I would like to study that science background can visit to the BARC, Baba Atomic Research Center, or can visit to the Rashtriya Chemical Fertilizer, means the chemistry background or agriculture background students, they can visit there. So as per our specialization or as per our subject, if suppose we will plan to visit the world, we and student, we both of us will grow together. This is what is I would like to say. Till date, I have visited 350 companies of India, and I was not aware about the industrialization. I was not aware about the manufacturing process, but my area of interest, my family background helped me to look into all these factors. And nowadays I'm taking comfortably and taking interest in all these aspects of industrialization, the impact of industrialization in organized sector as well as in unorganized sector. Okay, so we need to be well guided. The whole world is migrating from one place to another. Like students of Amravati are in America, students of Amravati are in Germany. Okay, when they are migrating from one place to another, that time they need to be well equipped with the few of the skills. Okay, they learn when they go there. That time they find it very difficult to get adjust. Adversity is there, and that is very natural. But if suppose somewhere else someone has discussed, then they do remember, we had a discussion about it, and I will think of it, and I will take my efforts, and I will definitely overcome it. So such a type of framework has to be in their mind then, and then they could come out of it. So this is what is very essential for students, for our kids, for our young generation. Sir, do we have one slide? I am active learning techniques, project-based learning, experimental learning, then technological learning, then peer-to-peer learning. So I will say there are organizations also, though we have discussed all these areas, but I would like to say there are organizations also, like in my field, NIPM is there, National Institute of Personnel Management, which is conducting lot of quiz competition for the student every year. So in science also, there are many more such a type of associations or organizations who are conducting essay type of competition or any other science exhibition. Okay, so we need to be participative in that, and that will help us to be with them. Cultural activity help us, social activity help us. These activity based on a academic component help us. So all these things has to be part of our syllabus. We have to be all with the teaching and learning method, lecture method, group discussion method, case study method. Okay, we have to be with all the combo pack. This is what is I would like to say, this way or that way, and all the time we need to be creative. That is very essential for this generation. Sir, next slide, please. Teacher as a facilitator. Sometimes we don't have to be in a center point. In a learner-centric approach, teacher
transition from being lecturers to facilitators and mentors. We don't have to be in a center point. We have to hand over the charge to the student that we have already discussed. So we are more as a facilitator. Now, if suppose group discussion is going on, and in that group discussion, you are one of the resource person. Whenever there is a need, you will jump, and otherwise let the group members lead the discussion. This need to be happen, and you have to encourage the students how to take on the group discussions, and before that also you could encourage them to prepare. On asking them on spot will also help, and sometimes you can help them to be prepared, and all these things will help them towards the problem solving skills. So you can decide one skill, any social skills or any managerial skills you could decide, and then on the basis of that the classroom could be leaded by the facilitator. So this need to be happen. Nowadays the student would like to be more with the friendly. They would like to have a class in a friendly environment, because they are born and brought up is totally different, and we have to take cognizance of this point, and has to be more in a role of facilitator. This I would like to say. Like whenever there is a cultural activity, so that time we do forget that we are a professor. We would like to be amongst them. आपल्याला त्यांच्यातलंच होऊन जायला आवडतं. कधी कधी आपण त्यांच्यासोबत डान्स करतो, कधी कधी त्यांच्यासोबत आपण जोक्स करतो. सो दॅट इज व्हॉट इज दे एन्जॉय. They also know their limits. We also know our limits, but we have to do it so that student will be open up, so that the fear, anxiety amongst them will be reduced. They will able to control, coordinate it, and that is very essential on a campus. That is very essential for them. We need to be very strict for the academic aspect. It doesn't mean that we will compromise. No, we will not compromise at all. We will be strict for that. Then and then student will respect. If we will be casual and we will compromise and we will be fun with the fun activity more, they will not respect. So both the way it need to be well balanced. Sometimes we could be slow, sometimes we could be very strict. So this will pave the way for a learning environment. Sir, next. Sir, next slide. Thank you. Benefits of a learner-centric approach: increases motivation amongst the student, then develops critical thinking, which is very essential, then prepares for real world challenges, and boost confidence. The confidence really boosts because they started taking interest and their interest is dominating. So that need to be happen at their level. They need to take interest. We are already interested. From last so many years, we are taking this subject and we know the pros and cons. We know the true facts about it. We know how to take on. We have our own understanding about it. Now it is the turn of the student. With the help of you, तुमच्या मदतीने त्यांनी त्या विषयामध्ये इंटरेस्ट घ्यायला सुरुवात केली पाहिजे. And the rapport amongst the professor, teacher and the student will also increase because of this. Next slide. Challenges in implementing learner-centric education, traditional mindset. Here we cannot help traditional mindset. So it takes a lot of time because we cannot control this. We are the student intake is with the help of their percentage. Whatever percentage they have, whatever score they have, so we are giving them the admission. But whatever attitudes they are holding from their from their heredity or from their social environment, त्यांच्या संगोपनामधल्या वातावरणामधून त्यांनी जो ॲटिट्यूड होल्ड केला आहे तो इथे चेंज करणं, इट्स व्हेरी टफ जॉब, इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. सो ग्रॅज्युअली इट डू चेंज. अशा काही सिच्युएशन येतात, ते या सिच्युएशन मध्ये इन्व्हॉल्व्ह झाल्याने, ते या सिच्युएशन मध्ये रिलेट झाल्यानेच ते बदलू शकतात ट्रॅडिशनल माइंडसेट. इफ सपोज दे विल स्टिक टू दॅट, इट विल नॉट बी युजफुल फॉर देम. ते त्यांच्यासाठी उपयुक्त ठरणार नाही. त्यांना बदलावं लागणार आहे आणि बदल हाच कॉन्स्टंट फॅक्टर आहे. बदलावं लागणार आहे आणि बदलच फक्त कॉन्स्टंट फॅक्टर असतो. Lack of resources. Some schools or institutions may not have access to the tools and materials required for this approach. आता आपण वेगवेगळ्या इक्विपमेंट, वेगवेगळ्या टूल्स, वेगवेगळ्या
रिसोर्सेसच्या माध्यमातून हा टॉपिक डिस्कस करत आहोत. बट सम ऑफ द कॅम्पस दे मे नॉट बी हॅव्हिंग सच अ टाइप ऑफ फॅसिलिटी, लाईक दे डोंट हॅव अ ग्राउंड, स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज दे डोंट हॅव, or they may not have a classroom with the TV set, or they may not have a Wi-Fi facility, or they may not be having a mechanism which we were discussing now, the scope for it. But see, खूप सारे लिमिटेशन असताना सुद्धा खूप जणांनी झाडाखाली शाळा चालवलेली आहे. एका टीचरनी सगळे टूथपेस्ट, शॅम्पूचे पॅकेट्स असं गोळा केलं आणि ABCD शिकवली. सो देअर आर इनोव्हेशन्स, देअर आर इनोव्हेटिव्ह वेज विथ द हेल्प ऑफ विच वी कुड डेव्हलप. आपण त्यांना मदत करू शकतो. आपण निराश व्हायचं नाहीये. वी डोंट हॅव टू गिव्ह अप though there are lack of resources. Nowadays donors are available. Nowadays CSR, corporate social responsibility, in that also, if suppose the college will prepare a proposal, as college don't have a fund to cater the needs of the student, they will prepare a proposal, they can approach to the industry, and industry will come, will do a inspection, and they will think that yes, we can give 5 computers to your students, we can install a water tank, we can construct a washroom for ladies and for gents. So many things can happen. You need to take the initiative for the corporate social responsibility proposal, and from where you can have a fund for your campus. So this can also happen. So lot of problems are there. Things are not easy. Sometimes we do get influenced by the negativity, but we do have to overcome. You can say we don't have choice. We do have to overcome. We have to think about uh, the future, and we have to move on. Now, about the curriculum constraint, balancing standardized testing and personalized learning can be challenging for educators. विचारल्या जातं तुमच्या विद्यापीठाचा नंबर कितवा आहे, किंवा असं विचारल्या जातं की सिलेबसमध्ये तुमच्या हे शिकवलं का. तर हे जे सिलेबस रिफ्रेमिंग करणं आहे, तर आत्ताच्या बदलत्या कन्सेप्ट त्या सिलेबसमध्ये आल्या पाहिजेत, आणि रेफरन्सेसची लिस्ट आपण चांगली केली पाहिजे. तर करिक्युलम मधले कन्स्ट्रेंट्स ओव्हरकम केले पाहिजे. कारण लोक व्हिजिट करतात वेबसाईटला, करिक्युलम पाहतात, आणि करिक्युलम मध्ये त्या गोष्टी आहेत का हे बघतात, किंवा त्या कॉलेजचं नाव वेल नोन आहे का हे बघितलं जातं, आणि त्यावर आधारित तिथे ऍडमिशन्स मोठ्या प्रमाणावर होतात. सो दिस इज व्हेरी टफ, दिस इज व्हेरी चॅलेंजिंग, बट टुगेदर वी कॅन डू इट, अँड वी हॅव टू डू इट. वी डू नॉट हॅव एनी चॉईस फॉर इट. So curriculum constraints are there. Sir, next slide, please. Solutions for effective implementation. Teacher training. Invest in a professional development to equip educators with the skills needed for a learner-centric approach. Now, one is we were discussing more with the personal development, and another is the professional development. We have to do a classification. Personal development means what, and professional development means what at a student level. So what will include in a personal development, capabilities building, and what will include in a professional development, and we have to talk about this with the student. Now, if suppose we have to include it for the teacher, then that is also very essential. I already said that we teachers, we professors are also in need of the training. We all the training is essential for everyone. Integrating technology, use digital platforms, apps, tools to foster personalized and interactive learning environments. Before corona, we were not aware about the Google Meet. Corona compulsion is there, and we started conducting online classes or online meetings. So we are little bit well equipped with this. Creating supportive learning spaces, flexible classroom designs that encourage collaboration and independent work. When I was with that research project in foreign for 16 students, so they were taking me in a dark room. Madam, do you have any difficulty? And whosoever was asking, that was quite younger to me. माझ्यापेक्षा कमी वयाने कमी असलेला व्यक्ती मला विचारत होता की मॅडम काय अडचणी आहेत विद्यार्थ्यांच्या, त्या तुम्ही इथे बोलू शकता. बिकॉज देअर वन स्टुडंट वॉज फ्रॉम स्वित्झर्लंड, देअर लँग्वेज वॉज डिफरंट, माय प्रोनाउन्सिएशन वॉज डिफरंट, सो दे वेर लिसनिंग, अँड द एज ग्रुप वॉज क्वाईट स्मॉल. तर अशा पातळीवर बघा, ते डार्क रूम मध्ये घेऊन जातात, टेक्निकलीज घेऊन जातात, तर आपल्याला
इतर लोकांना आपण काय बोलतोय ही प्रायव्हसी छान मेंटेन केलेली असते. तर मला असं म्हणायचं आहे की ज्या काही प्रायव्हसीच्या त्या जर ट्रस्टवर्दी आपण काही प्रमाणात म्हणा किंवा अ, काही लोकांसोबत म्हणा राहू शकलो तर ते छान एन्करेजिंग आपल्या सगळ्यांना असू शकतं आणि तसं असणं आपल्या कामाच्या ठिकाणी गरजेचं आहे. Policy changes, advocating for educational reforms that support a more flexible student driven curriculum. सगळ्यांची ही नीड आहे की स्टुडंट ड्रिव्हन करिक्युलम असला पाहिजे, स्किल डेव्हलपमेंटचा कॉम्पोनंट त्यात असला पाहिजे, तो जॉब ओरिएंटेड असला पाहिजे. पण जेव्हा पर्सनल आणि प्रोफेशनल याच्यामधली दरी काय आहे आणि पर्सनल म्हणजे काय, कोणते कॉम्पोनंट हे वैयक्तिक पातळीवर समजून घेणं गरजेचं आहे, तर आकलन शक्ती, अडॅप्टॅबिलिटी. I said, no, AQ is there now. Adaptability with the situation will increase. Then and then we could able to cope up with the policy changes also. Sir, next slide, please. This we have discussed. I would like to just run through with this component. Students are given freedom to choose projects that align with their interests, leading to greater engagement and learning outcomes. Positive outcomes include improved academic performance, better communication skills, and increased student satisfaction. This example I would like to discuss. Sir, next slide, please. We'll take together in a project also. Case study I have already commented and discussed, sir. Next slide. Conclusion. Okay. Before that, I would like to comment on the project. We all have dissertation, project reports, mini research. In that also, we could take or select the concept uh, about which we are aware thoroughly. And with the help of our awareness or knowledge, we can ask the student to be collaborative. आपल्यासोबत त्या स्टुडंटला कोलॅबोरेटिव्ह राहायला सांगू शकता आणि त्या विद्यार्थ्याला पण तो स्कोप डेव्हलप होतो. आपल्याला पण त्याच्यामध्ये आनंद वाटायला लागतो आणि अशा प्रकारचे जर आपण काही प्रोजेक्ट विद्यार्थ्यांसोबत केलेत किंवा विद्यार्थ्यांसोबत घेतलेत, तर आपलंही स्पीड वाढू शकतो. आपले इंडिव्हिज्युअल एफर्ट कमी पडतात. त्यामुळे आपला पण स्पीड त्यांच्यासोबत वाढू शकतो. तर 5 वर्षामध्ये 5 प्रोजेक्ट देणं कठीण आहे. पण 5 वर्षामध्ये 2 किंवा 3 प्रोजेक्ट आपण विद्यार्थ्यांच्या सोबत देऊ शकतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पण हे कळून चुकतं, की या पर्टिक्युलर प्राध्यापकांकडून आपल्याला हा प्रोजेक्ट मिळाला होता आणि त्या प्रोजेक्टमुळे आपल्याला आपला इंटरव्ह्यू चांगला गेला आणि त्या इंटरव्ह्यूमध्ये आपल्याला चांगले मार्क्स मिळाले आणि देन दॅट कॅन्डिडेट, दॅट स्टुडंट बिकम व्हेरी हॅपी. तर हे होणं अपेक्षित आहे कारण एक बॅच दुसऱ्या बॅचला पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह दोन्ही प्रकारचे फीडबॅक देत असतं. वेगवेगळ्या तऱ्हेचे विद्यार्थी आपण अनुभवतो. पण जो पॉझिटिव्ह फीडबॅक जातोय तो मात्र हा पक्का असतो, सस्टेनेबल असतो. असं मला प्रोजेक्ट रिपोर्टच्या बाबतीत सांगायचं आहे. The learner-centric approach is a key to modernizing education and preparing youth for a dynamic, ever-changing world. By focusing on student engagement, personalized learning, and holistic development, we can foster a generation of empowered critical thinkers, which is very essential. One has to be independent in their views. Call to action: educators, policymakers, and institutions should work together to implement learner-centric strategies that support youth development. So youth development is a very vast subject, and that subject is compromises with various elements, and it is we, the trainer, the guide, the well-wisher, the काय म्हणता येईल motivator for our student community, for our youth, future youth. So we have to be with the honest planning. We have to be with the honest design, which will give the results. So if suppose we will do this, we will feel content, at least for 1 or 2 students. We have to do it. Means we have to do it. So this oath one can take and can be happy with ourselves first. We need to be happy first, and then the rest of the community will definitely be happy. So I am very much thankful for the Sant Gadge Maharaj Amravati University and Sipna Engineering College
and the architecture college also, and all my colleagues. We all know this subject, but you have given me the opportunity, and everyone was listening me. So it's the happiest moment for me. Good evening to all of you. Thank you. Good evening. Good evening. Questions are welcome. Any questions, please? I think there are no questions as such, but if there are any questions, they can interact it with the madam. They can be directed. Harsha madam, Yes, please sir. go ahead for vote of thanks. Yes, sir. Good afternoon to one and all. On the behalf of Santa Gadge Baba Amravati University Amravati and SIPNA College of Engineering and Technology Amravati, I extend our gratitude to Dr. Chitralekha S. Razuskar, Professor at Karve Institute of Social Service, Pune. I am privileged today to deliver this vote of thanks for such an insightful session we just had on the learner-centric practices for the youth development. Madam, your expertise for the youth development have truly resonated with us. You truly have made us understand how the various pedagogical approaches and the innovative teaching approaches are important for aligning the educational processes with the goals of NEP 2020 implementation. So I once again sincerely thank you, madam, for your valuable time, insights, and for being part of this program. At the same time, again, I'm thankful to Mohammad Atiq sir and our principal sir for constant support. Thank you all the participants. Thank you each and everyone once again. Thank you. Thank you, madam. Ankit sir, let me start the next session immediately. Ankit sir. I think our next resource person, Dr. R.T. Bedre sir, have recently just joined. Yes, please. Yes, sir. Welcome, sir. Welcome. No, thank you. I think Ankit sir is not available, or may possible he might be busy. So let me welcome Professor Dr. R.T. Bedre sir. He is the resource person for the next session. I welcome you on behalf of our Santa Gadge Amravati University, is Madan Mohan Malviya Teacher Training Center. Also on behalf of Santa Gadge Amravati University, MMTTC, and the SIPNA College of Engineering and Technology, Amravati, SIPNA School of Planning and Architecture. Professor Dr. R.T. Bedre sir is MA, MPhil, and PhD set in English. He completed his Masters in English from Maharashtra Udayagiri Mahavidyalaya, Udgir, Maharashtra. He also completed his research degree from Bharati Vidyapit, Pune. He completed his MPhil from Madurai Kamaraj University, Madurai, Tamil Nadu. As far as his career aspects are concerned, he is presently working as a director UGC HRDC at Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, a central university at Sagar, Madhya Pradesh. He worked as a full-time principal at Sri Pandit Guru Pardikar Mahavidyalaya, Shirsala district, Bid, Maharashtra for 6 years. He served as a lecturer in English in Art Commerce Science College, Gangakhed district, Parbhani for 17 years. He delivered 15 talks on NEP 2020 in offline and online mode at various courses. He has published 5 articles on NEP 2020 and 6 articles on higher education issues in the university, news published by Association of Indian Universities, New Delhi. Has authored 7 books, including a
play in English, and 2 short stories in Marathi. He edited 4 books. He published more than 50 papers in journals, books, and proceedings. As per research projects are concerned, he completed 3 minor research projects sponsored by UGC, completed 1 research project financed by SRTMU Nanded, Ramananda Tirtha Marathwada University, completed 1 research project financed by ICSSR Mumbai, completed 1 major research project sponsored by UGC New Delhi. He successfully guided our actual person belongs to Maharashtra, working with Sagar, Madhya Pradesh, Dr. R.T. Bedre, sir. Welcome, sir. And on behalf of Sipna College, I welcome you. Thank you, sir. Thank you very much. Just give me 1 minute. Am I audible and visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Absolutely. Thank you. Visible, Thank you audible. very much. Thank you, Dr. Nilesh Kasetji, on behalf of Chetna College. I think Amravati itself. Yes, sir. Amravati. Right. Thank you. At the very outset, let me thank Professor Mohammad Atiq Sahab, Honorable Director of MMTTC Sant Gadge Baba, Amravati University, Amravati, and my dear friends over here. और जितने भी सारे लोग यहाँ जुड़े हैं उन सारे लोगों को मेरा नमस्कार। जैसे कि डॉक्टर नीलेश जी मेरा प्रोफाइल आपके सामने रख रहे थे, तो इट इज क्वाइट क्लियर देयर दैट आई बिलोंग टू महाराष्ट्र एंड बिफोर लास्ट 5 years I served in Maharashtra. So naturally I know 3 languages, English, Hindi and Marathi. But at such national platform, it is expected that we should keep ourselves to Hindi and English. So I will be going both way. जैसे कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, आप लोगों से, आप में से कुछ लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना कैमरा ऑन रखें। थोड़ी सी मेरी ये दिक्कत है कि बिना किसी को देखे बात करना थोड़ा मुश्किल जाता है मुझे। और इसमें दूसरी एक मुश्किल ये होती है ऑनलाइन मोड में कि अगर आपके सामने कोई नहीं है, आपको पता नहीं चलता कि आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। आप इधर बात करना कंटिन्यू रखते हैं और उधर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो गाड़ी चलती रहती कहाँ जाती है किसी को पता नहीं चलता। देन आफ्टर सम टाइम द फोन कॉल इज रिसीव्ड दैट यू आर डिस्कनेक्टेड। तो उससे बचने के लिए, और मुझे थोड़ा सा आप धीरज कहिए या हौसला कहिए या फिर रेस्पॉन्स कहिए, उसके लिए आप में से कुछ लोगों को अपना कैमरा ऑन रखने का मैं गुजारिश करता हूँ। एनीवे, बट नेचुरल कि यहाँ सारे लोग महाराष्ट्रियन हैं इस प्लेटफॉर्म पे या इस मीटिंग में, इस प्रोग्राम में। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू बिलोंग टू महाराष्ट्र। आई थिंक नोबडी इज देयर फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र। इफ समवन इज देयर दैट मस्ट बी फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, डेफिनेटली नोबडी फ्रॉम साउथ इंडिया। तो ये हालात अपने, या ये अपना स्टेटस है, स्टैंडिंग है अपने ऑडियंस की। जिस टॉपिक पे सर ने मुझे बात कहने के लिए कहा है, that is holistic education as recommended by NEP 2020. अब देखो, 2 वर्ड्स हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं, होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। द वेरी clear meaning of holistic is
what we can say in Marathi, sarvangin, not one-sided, not specific one. You must have knowledge of all those walks of life which are necessary for you. अगर मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, हम पुराणों में पढ़ते थे या पढ़ते हैं आज भी कुछ लोग कि राजा महाराजों के या वॉरियर के बच्चे गुरुकुल में किसी ऋषि के पास शिक्षा के लिए जाते थे. अगर आप किसी राजपुत्र की बात करोगे तो हमें दिखता था कि वो धर्मशास्त्र भी पढ़ता था क्योंकि उसको राज कारभार चलाना था. वो वॉरफेयर भी सीखता था या फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा सा सीखता था. मतलब एक राज चलाने के लिए जो भी चीजें उसको आवश्यक होती थी वो सारी चीजें वो सीखता था. इट मीन्स दैट एजुकेशन मेड हिम होलिस्टिक इन दैट सेंस. whatever walks of life she is supposed to deliver in, मतलब जिंदगी के जिन जिन हिस्सों में जिन जिन क्षेत्रों में उसको काम करना था उस क्षेत्रों की वो थोड़ी थोड़ी जानकारी रखता था. दैट इज व्हाट वी लर्न इन आवर पुराणास. इसलिए हम देखते हैं कि हमारे जितने भी मिथोलॉजी से कैरेक्टर्स है, आप रामायण देख लीजिए, आप महाभारत देख लीजिए, इसमें अलग अलग ऋषि हैं. कोई द्रोणा है, कोई दुर्वासा है, कोई वो ये है, कोई वो है. व्हाट इज दिस? एंड रिमेंबर, these rishis used to give education or offer knowledge in different fields. But हुआ क्या कि over the years, पिछले 100-200 सालों से हम कहेंगे कि our education became one-sided, है ना. हम आर्ट्स में है तो वी आर स्टडिंग सब्जेक्ट्स इन आर्ट्स ओनली. We for student of science, we are studying science subjects only. या किसी भी क्षेत्र का अगर हम विद्यार्थी है तो हम सिर्फ उसी दिशा में जा रहे थे. एंड समटाइम बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द करिकुला इट हैपेंड दैट वी डिडंट हैव अ वेरी वर्केबल नॉलेज ऑफ व्हाट वी नीड इन एवरीडे लाइफ. कभी कभी मजाक में एग्जांपल दिया जाता है कि भाई बच्चा इंजीनियर बना है लेकिन अगर फ्यूज चला गया तो वो फ्यूज भी बना नहीं पाता है, उसको चला नहीं पाता. इट मीन्स व्हाट, उसके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज तो है, वो बी हो गया, बीटेक हो गया, लेकिन जिंदगी में जो रोजमर्रा की चीजें हैं शायद उसको भी वो नहीं कर पाता था. सो कहने का मतलब यहाँ ये है कि होलिस्टिक एजुकेशन वाज नॉट गिवन फॉर लॉन्ग पीरियड. मैं आपके साथ मेरा सेशन प्रेजेंटेशन आपके साथ रखता हूँ ताकि चीजें आपको थोड़ी आसान हो जाएगी. 1 मिनट. एक मिनट. आपके सामने कुछ आया है? Yes, sir. One. Started screen sharing. Started, but I think not visible to me. अब आपको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, थैंक यू. एक मिनट, थोड़ा मुझको ऊपर लेने दीजिए. हाँ, क्या है? ये पूरे हो गए ना इसमें? चल, एनीवे मैं इसको थोड़ा सा ये कर लेता. So today we will have a dialogue. डायलॉग भी कहेंगे, हम डिबेट भी कहेंगे, क्योंकि मैंने चाहता कि मैं जो चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं उसको आप आंख मूंद कर स्वीकार कर ले. नो, क्योंकि हम जानते हैं कि एनईपी को लेकर हमारे दिमाग में बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारी आशंकाएं हैं.
ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, इसमें से ये होगा, इसमें से वो होगा, वो सारी चीजें मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। और जैसे कि मैंने कहा, मेरा प्रेजेंटेशन कम रहेगा और आपके साथ डायलॉग ज्यादा रहेगा, ताकि अंत में भी हमारे पास थोड़ा सा वक्त बचा रहे। जैसे कि आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग कि द फोकस ऑफ माय टॉक टुडे विल बी ऑन होलिस्टिक एजुकेशन। एनईपी बात करती है होलिस्टिक एजुकेशन देने की। अगर हमें होलिस्टिक एजुकेशन देना है तो हमारी ये जरूरत बन जाती है कि आज का जो हमारा एजुकेशन सिंगल डिसिप्लिन से जाता है, उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनना पड़ेगा। दैट इज द रिक्वायरमेंट। मैंने कहा कि होलिस्टिक चाहिए। सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि मैं कोई आ, एक राजा का बच्चा हूं, मान लीजिए मैं, तो मुझे दरबार भी चलाना है, मुझे लड़ाई भी चलानी है, मुझे राजनीति भी करनी है, मुझे फाइनेंस भी चाहिए। तो एक डिसिप्लिन मेरा काम नहीं बढ़ा सकती या मेरे काम नहीं आ सकती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे जो आज का जो मेरा डिसिप्लिन फिक्स है उसको तोड़ के आगे जाना पड़ेगा। तो my point is here, when we say holistic education, by default, in the present context, it becomes multidisciplinary. आज के शिक्षा व्यवस्था को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाए बिना हमारी शिक्षा होलिस्टिक हो ही नहीं सकती। दैट इज वन थिंग। देयरफॉर आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग कि हम ये दो वर्ड एक साथ इस्तेमाल करते हैं, होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, बट प्लीज रिमेंबर वी हैव टू टेक इन दिस वे। हमें उसको इस प्रकार लेना पड़ेगा कि होलिस्टिक एजुकेशन वाया मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। मैंने कहा कि मुझे जिंदगी में जो चीजें जरूरी है उस सारी चीजों के बारे में जानना है, और आज की मेरी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, मुझे वो सारी चीजें एक डिसिप्लिन में नहीं देती है। सीबीएसई से आने से पहले हालत क्या थे कि आप जिस फैकल्टी के स्टूडेंट हुआ करते थे बस उसी का आपको ज्ञान मिलता था, उसके आगे का नहीं मिलता था। बट दिस पॉलिसी सेज दैट वी हैव टू बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी। तो अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा मूव करने में टाइम लेगा शायद, 1 मिनट। हाँ, अब दूसरी एक बात, अब कुछ चीजें एक साथ हमारे सामने आ जाती है जो हमें कभी कभी कंफ्यूज करती है। दीपा जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके सामने रखना चाहूंगा कि फॉर दिस एनईपी 2020, व्हाट इज मॉडल ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन और व्हाट इज होलिस्टिक एजुकेशन to the NEP 2020, the type of education was given in the ancient India is holistic education. जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, अब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, भीम, अर्जुन, ये आप इसको कैरेक्टर मान ले किसी स्टोरी का या फिर हिस्ट्री के कैरेक्टर मान ले, ये आप पे डिपेंड करता है, बट एज एग्जाम्पल्स वी कैन थिंक अबाउट देम। तो उस प्रकार का एजुकेशन दिस एनईपी पॉलिसी वालों के लिए या इस पॉलिसी मेकर्स के लिए होलिस्टिक एजुकेशन था। दैट वाज होलिस्टिक एजुकेशन। इन अदर वर्ड आई कैन से दैट, मैं उसको आसान भाषा में कहूं तो फॉर दिस पॉलिसी इंडिजिनियस एजुकेशन ऑफ इंडिया इज होलिस्टिक एजुकेशन और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। इस बात को आपको दिमाग में लेके चलना है सबसे पहले तो। इसलिए हम बार बार देखते हैं इस पॉलिसी में कि हमारे रेफरेंसेस कहाँ है, नालंदा में है, यहाँ है, वहां है, समथिंग लाइक दैट। हमारे आईकेएस में क्या आता है, वहीं से लोग आते हैं। इट मीन दैट फॉर दिस पॉलिसी एज द मॉडल ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन इज द इंडिजिनियस एजुकेशन ऑफ इंडिया विच वॉज बीइंग गिवन some 1000 years ago. मेरे ख्याल से कुछ लोगों का कैमरा ऑफ हो चुका है। हाँ, यस दिलेश जी, कम से कम आप तो कोशिश करना कि आप मेरे सामने रहें। मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। एनीवे, तो फिर सवाल बनता है कि व्हाई इंडिजिनस एजुकेशन ओनली। उसके पीछे का भी हमें थोड़ा सा
उस मंसूबे को, उस मंशा को हमें समझना पड़ेगा। वाई इंडिजीनियस? अगर चाहता तो किसी और देश का भी होलिस्टिक एजुकेशन का मॉडल हम ले सकते थे। जो देश बहुत सक्सेसफुल है, हम चाइना की बात कर सकते हैं, अमेरिका की बात कर सकते हैं, किसी और देश की भी बात कर सकते थे, बट ना, हियर देर इज सम पर्पस or there is a defined purpose why there is focus on Indian indigenous education। और कारण मैंने आपके सामने रखे। एक फॉरमोस्ट रीजन है यहाँ कि हमें जो 200 साल का कॉलोनियल इंपैक्ट हमारे शिक्षा व्यवस्था पे है उसको हटाना है। प्लीज रिमेंबर, वी नो दैट, आप में से बहुत सारे लोग जिनका वास्ता हिस्ट्री से है या पॉलिटिकल साइंस से है या एजुकेशन से है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि लॉर्ड मेकाले नाम का एक बैरिस्टर हिंदुस्तान में आया था और उसने एक नए प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का यहाँ पुरस्कार किया, यहाँ रखी। इसलिए आज भी हम उसको मेकाले पॉलिसी कहते हैं, लॉर्ड मेकाले की पॉलिसी। और उसके तहत हुआ क्या कि जिस प्रकार की शिक्षा यहाँ ब्रिटिश हिंदुस्तान में आने से पहले दी जाती थी उसको हटाकर ही ऑफर्ड अस लर्निंग इन यूरोपियन साइंसेस एंड यूरोपियन लिटरेचर एंड यूरोपियन सोशल साइंसेस। मैं कहना ही चाह रहा हूं यहाँ कि हिंदुस्तानी शिक्षा पद्धति को हटाकर उसने यहाँ यूरोपियन शिक्षा पद्धति का मॉडल हमारे सामने रखा। एंड वी नो दैट इट बिगैन टू वर्क फ्रॉम 1858। अब लेके जाओ, बंद हो गया। इट बिगैन टू वर्क आफ्टर 1858। मैं 1858 का क्यों नाम ले रहा हूं यहाँ, मतलब उस ईयर को क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूं? आप जानते हैं कि 1857 में एक अपराइजिंग बना था, एक म्यूटिनी बना था, हम जानते हैं जिसको, ये तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, ये सारे नाम वहीं से हैं। एक अपराइजिंग हुआ था, एक रिवोल्ट हुआ था, और उस रिवोल्ट को खत्म करने के बाद इंडिया बिकेम कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। थोड़ा इस बात को हम समझ ले पहले। 1857 के पहले इंडिया वाज रूल्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन 1858 के बाद इंडिया बिकम्स अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर डायरेक्टली अंडर द क्राउन ऑफ इंग्लैंड। और हम जानते कि उसी साल हिंदुस्तान में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। और वहां से शुरुआत होती है हिंदुस्तान के हायर एजुकेशन की। एंड देन वी सी दैट देयर आर अ गुड नंबर ऑफ कॉलेजेस, जैसे कि पुणे का आप जानते हैं कि फर्गसन कॉलेज है, या फिर कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज है। ऐसे बहुत सारे कॉलेज बाद में निकले हैं। जो निकाले किन्होंने हैं? हिंदुस्तानी लोगों ने निकाले हैं। शायद आपको पता होगा कि पुणे के फर्गुसन कॉलेज को बनाने में तिलक जी थे, अगरकर तो वहां के पहले प्रिंसिपल थे। कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज निकालने में राजा राम मोहन राय जी की बड़ी भूमिका थी। या जो भी चीजें हैं, मैं कहना यह चाह रहा था कि वहां से हमारे साथ और हमारे देश में एक कॉलोनियल एजुकेशन शुरू हो जाता है। कॉलोनियल एजुकेशन, मैं कहूंगा यूरोपियन एजुकेशन शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ का जो देशी शिक्षा था या शिक्षा थी उसको हटाकर हमने यहाँ यूरोपियन मॉडल लिया। अब यूरोपियन मॉडल क्या था, उसमें हमने क्या सीख लिया? हमने वहां ये सीखना, हमने शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, हमने यूरोपियन साइंटिस्ट को पढ़ना शुरू किया, हमने यूरोपियन स्कॉलर्स को पढ़ना शुरू किया। प्लीज रिमेंबर, 1858 के पहले हम अरिस्टोटल को नहीं जानते थे, नहीं जानते थे अरिस्टोटल को हम, या शेक्सपियर को जानते तो बहुत कम लोग जानते थे शेक्सपियर को। लेकिन हुआ क्या, उस टाइम के बाद, उस वक्त के बाद हमारा करिकुलम पूरी तरह यूरोपियन बन गया, पूरी तरह यूरोपियन बन गया। हालत तो ये है, हालत तो ये है कि वी पीपल नो लेस अबाउट इंडियन एंड नो मोर अबाउट यूरोपियन। मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।
we Indians know more about Europeans and less about Indians. जैसे एग्जांपल आपको दे दूं, अगर आपके यहाँ कोई, आपको शायद आपके पास सारे प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी डिसिप्लिन का फाउंडर कौन कौन है ये जानने की कोशिश कीजिए। हमें पढ़ाया गया है कि फलाना यूरोपियन व्यक्ति, फलाना ग्रीक व्यक्ति, फलाना फ्रेंच व्यक्ति, फलाना इंग्लिश व्यक्ति उसका फाउंडर है। अब मैं साइंस और टेक्नोलॉजी को तो मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन जहां तक मुझे पता है, अगर आप किसी इकोनॉमिक्स के बच्चों को पूछोगे कि हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उसका आंसर आ जाता है एडम स्मिथ। अगर किसी हिस्ट्री वालों से आप पूछते हैं कि हिस्ट्री का फादर कौन है, फाउंडर फादर कौन है, तो वो कहेगा हेरोडोटस। सोशियोलॉजी वाला कहेगा अगस्त काम्त है। पॉलिटिकल साइंस वाला कहेगा अरिस्टोटल है। अब ये पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी में काम करने वाले लोग हैं। अब फिर मैं, हमारा यह सवाल बनता है, यह सवाल बनता है कि क्या ब्रिटिश एजुकेशन हिंदुस्तान में आने से पहले क्या यहाँ कोई राजनीति नहीं थी, यहाँ कोई इकोनॉमिक्स नहीं था क्या, यहाँ कोई सोशियोलॉजी नहीं थी क्या, या कुछ नहीं था क्या? यहाँ डेफिनेटली था। बट व्हाट हैपेंड, as our curricula were replaced with the European curricula, हमारे जो भी करिकुला उस टाइम रहे होंगे उसको सारे को हटाकर हुआ क्या, उसमें सारे यूरोपियन स्कॉलर्स आ गए, यूरोपियन लिटरेचर आ गया, उसमें यूरोपियन सोशल साइंस आ गए। सो माय पॉइंट इज दैट द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हियर इज to wipe out the 200-year-old colonial influence from our curricula। सबसे पहले तो हमें उसको अपने करिकुला से हटाना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और देके आगे बढ़ूंगा कि अब मेरा बेसिक डिसिप्लिन इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर रहा है, तो मैं शेक्सपियर के बारे में बहुत सारी चीजें जानता हूं, लेकिन मैं कालिदास के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं। या मैं कहूंगा कि मैं यूरोपियन लिटरेचर से या इंग्लिश लिटरेचर से मैं 20-50 ड्रामेटिस्ट या नॉवलिस्ट के नाम आपको बता सकता हूं। मैं शेक्सपियर के कंटेम्पररी कौन थे, उस टाइम में राजा कौन था, रानी कौन थी, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रख सकता हूं। लेकिन कालिदास के सिवा किसी और नाटककार का नाम मुझे पता नहीं है। व्हाई इट इज सो? ये क्यों है ऐसा? क्योंकि उसको पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मौका मिला? वो मेरे करिकुला में नहीं थे। इसका मतलब आवर एंटायर करिकुला इन ऑल सब्जेक्ट्स वेर कॉलोनियल। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग, टू हैव मोल्डेड द लाइन ऑफ थिंकिंग। हाँ, ये भी सबसे बड़ी बात है। मैंने एक स्लाइड को मैंने यहाँ स्किप किया है। लॉर्ड मैकॉले का एक बहुत बड़ा सेंटेंस फेमस है यहाँ। एक लॉर्ड मैकॉले का एक सेंटेंस, उसके मिनट से हम कई बार कोट कर चुके हैं। वो एक जगह कहता है कि विद दिस एजुकेशन वी वांट टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंटरप्रिटेटर्स। उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने पैराफ्रेज करके रख रहा हूं। लॉर्ड मैकॉले उसके 9 पेज के मिनट के अंत में ये कहता है, आप में से शायद कुछ लोगों ने लॉर्ड मैकॉले के मिनट्स पढ़े होंगे, सिर्फ 9 पेज का डॉक्यूमेंट है, नॉट मोर देन दैट। सिर्फ 9 पेज का डॉक्यूमेंट है। और उसके अंत में वो ये कहता है कि हम यहाँ एक एक ऐसा क्लास बनाना चाहते हैं जो क्लास हम लोगों में और जो इलिटरेट इंडियंस हैं उनके बीच एक, क्या कहेंगे हम, बिचौलिया का काम करे, एक इंटरप्रिटेटर का काम करे। और वो आगे कहता है एक ऐसा क्लास who may be Indian by blood and color, but they may be English in taste, in opinion, in intellect and in moral। कोई है मेरे साथ कि सारे गायब हो गए? हेलो, इज देयर समवन? यस यस, थैंक यू। Yes, sir. थैंक यू, प्लीज समवन बी विद मी। तो वो क्या कहता है कि we want to create such a class who may be by appearance Indian, but by thinking, by taste, they will be European or they will be English।
वो एक जगह ये भी कहता है कि हम इस प्रकार की शिक्षा इस देश में देंगे जिसको जिसको पढ़ने के बाद, जिसको लेने के बाद सारे इंडियन ये सोचने लगेंगे कि जो भी यूरोप का है, जो भी इंग्लैंड का है, वो अच्छे क्वालिटी का है, और जो भी यहाँ का लोकल का है वो लो क्वालिटी का है. इट मीन्स आवर थॉट प्रोसेस वॉज ऑल्सो कॉलोनाइज्ड. तो उसको डीकॉलोनाइज करने के लिए भी ये पॉलिसी कहती कि अब हमें यूरोपियन मॉडल को हटाकर हमारा इंडिजिनस मॉडल लाना है. दूसरी बात, टू हैव डेवलप्ड रिस्पेक्ट एंड ऑ फॉर वेस्टर्न सिस्टम. हाँ, ये भी बात बहुत जरूरी है. मैं आपको बता दूं कि कॉलोनियल इन्फ्लुएंस सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं है, हर जगह है वो. जैसे कि जो भी चीज वेस्ट वर्ल्ड से बिलोंग करती है हम उसको अच्छा मानते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं. जब तक किसी एक्टर को ऑस्कर नॉमिनेशन नहीं मिल जाता तब तक वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं बन जाता. दीपा जी, आप मुझे सुन रही है ना? जब तक किसी एक्टर को ऑस्कर नॉमिनेशन नहीं मिल जाता तब तक वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है. जब तक किसी राइटर को नोबेल का नॉमिनेशन या बुकर प्राइज का नॉमिनेशन नहीं मिल जाता तब तक वो हमारे लिए, हम उसको सीरियसली लेते नहीं है. हमारे लिए दादा साहब फाल्के उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हमारे लिए भारतीय ज्ञानपीठ उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इवन हमारे लिए भारत रत्न भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारे लिए नोबेल प्राइज फॉर पीस है. मतलब जो भी चीजें वेस्टर्न वर्ल्ड से आती है उनको लेकर हमारे दिमाग में एक रिस्पेक्ट है, एक डर है. तो दैट इज देयर, टू रिमूव दैट आल्सो इट इज रिक्वायर्ड है. तीसरी चीज, कॉलोनियल लेगेसी से हुआ क्या था कि इट हैड डेवलप्ड हेट्रेड टुवर्ड्स ओन कल्चर. हाँ, ये सबसे बड़ी बात है. मैं इसको थोड़ा कम कर दूं क्या, ताकि मैं किसी और को देख सकूं? हाँ, यस नीलेश जी, आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे. Yes, sir, I am here. यस, थैंक यू. तो वन मोर थिंग दैट आई टोल्ड यू, ये कॉलोनियल लेगेसी हम लोगों में अपने ही कल्चर के प्रति, अपने ही सिविलाइजेशन के प्रति थोड़ा सा इनडिफरेंस पैदा किया था उसने. जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि बाद में एक ऐसी पीढ़ी यहाँ पैदा हुई जो पीढ़ी चाहती थी कि उन्हें इंग्लिश एजुकेशन मिले. वो चाहती थी कि वहाँ इंग्लिश लोग आके यहाँ कुछ काम करें. वो चाहती थी कि हमारा सोशल सिस्टम भी उनके तरह बन जाए. एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप उसको थोड़ा सा अदर लाइट में लेना. हमने राजा राम मोहन राय जी का नाम सुना है. मैंने तो शुरू में कहा कि उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की. लेकिन दूसरा एक काम है जिसको लेकर हम राजा राम मोहन राय जी को बार बार याद करते हैं, दैट इज ही, with the help of the governor of that period, he banned the सती प्रथा. हमें जानते हैं ना कि उसने लॉर्ड बेंटिक को, मतलब बार बार कहकर उन्होंने सती प्रथा को बैन किया था. एक बात समझ लेना यहाँ कि ब्रिटिश नेवर वांटेड टू इंटरफेयर विद योर सोशल सिस्टम, नेवर. उनको आपके सोसाइटी में क्या चलता है उनसे कोई लेना देना नहीं था, नहीं था, बिल्कुल नहीं था. रिमेंबर, उनका डे वन से उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि यहाँ का पैसा लूट के लेके जाना है, यहाँ का माल लेके लूट के जाना है. दैट वाज वेरी क्लियर. ये बात अदर शासकों के साथ नहीं लागू होती. हम दिल्ली सल्तनत से जब शुरुआत करते हैं ना 12वीं शताब्दी के बाद, जितने भी वहाँ रूलर आए हैं, इस्लामिक रूलर आए हैं, उसमें से वापस कोई नहीं गया है. सारे यहीं रहे, यहीं मरे. उन्होंने जो भी बनाया है यही बनाया है. प्लीज रिमेंबर, मुगल बादशाहों में से तो एक भी बादशाह वापस नहीं गया, प्लीज रिमेंबर. लेकिन अंग्रेजों के साथ ये बात नहीं थी. अंग्रेजों का ये बात क्लियर थी कि उनको ये सारा लूट के लेके जाना है. उन्होंने वही चीजें हमारे लिए छोड़ी है जिन चीजों को लुटा के लेके जाना फायदेमंद नहीं था. जैसे कि हमारे लिए रेलवे बनाई, रेलवे को लेके जाना उनके लिए संभव नहीं था. रेलवे लाइन डाली,
उनको उठा के लेके जाना संभव नहीं था, इसलिए हमारे साथ वो बनी है, अदरवाइज उसको भी उठा के लेके जाते। मेरा कहने का मतलब ये था यहाँ कि बिकॉज ऑफ दिस कॉलोनियल एजुकेशन व्हाट हैपेंड, we some Indian people wanted to model our society on the European line. जैसे कि हम डेमोक्रेसी की बात करूं, हमारा जो डेमोक्रेसी का मॉडल है, प्लीज रिमेंबर, इट इज मोर और लेस इन्फ्लुएंस बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब हुआ क्या, इंग्लैंड का राजा या रानी थी, उसकी जगह हमारे पास राष्ट्रपति आ गए। वहां का प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है, हमारा भी प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है। हमारे पास भी गवर्नर, उनके पास भी गवर्नर है। मतलब बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ यूरोप से आती है। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, इमिटेटिंग द वेस्टर्न मॉडल्स इन ड्रेसिंग एंड फूड पैटर्न, ये भी बहुत जरूरी है। आज जिस प्रकार का पहराव हम पहनते हैं, डेफिनेटली ये हमारा इंडियन नहीं है, प्लीज रिमेंबर। आज जिस प्रकार के शर्ट, जिस प्रकार के पैंट हम पहनते हैं, दैट इज नॉट आवर ओन। नीलेश जी, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि हमारे वकील साहब काला कोट क्यों पहनते हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या है, मुझे आज तक पता नहीं चला। आई डोंट नो व्हाई, क्यों वहां बार बार माय लॉर्ड कहना पड़ता है, आई डोंट नो। मतलब जो कॉलोनियल लेगेसी वहां बनी थी, उसी को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। माय लॉर्ड कहना, काला कोट पहनना, आई डोंट नो व्हाई, नहीं समझ में आया मुझे। मैं कहना ये चाह रहा था कि हमारा ड्रेसिंग पैटर्न, हमारा फूड पैटर्न देख लीजिए। मैं एग्जांपल एक छोटा सा दे दूंगा आपको कि आप थोड़ी 1960 की या 50 की मूवी देखना, मराठी मूवी देखना, कोई और मूवी देखना, उसमें देखा जाता है कि जब कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले उसको, जैसे वो आ जाता है, उसको हाथ पांव धोने के लिए एक बाल्टी में पानी रखा जाता था, बकेट में, और एक व्यक्ति वहां हाथ में टॉवेल लेके खड़ा होता था। और जैसे वो अपना हाथ पांव धो के वापस आ जाता, टॉवेल से हाथ पहुंचते पहुंचते, जैसे ही वो बैठ जाता, घर में से कोई व्यक्ति एक प्लेट में गुड़ और एक लोटे में पानी लेके आता था। रिसीविंग आवर गेस्ट्स विद जैगरी एंड वाटर इज वॉज इंडियन कल्चर। आज क्या है, आज चाय और कॉफी, ये हमारे इंडियन रिसीविंग कल्चर का पार्ट बन चुके हैं। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि ब्रिटिश या यूरोपियन हिंदुस्तान में आने से पहले या चाय और कॉफी नहीं मिलती थी, बिल्कुल नहीं मिलती थी। ये सारे कॉलोनाइजर जो थे, सारे यूरोपियन थे जिन्होंने चाय और कॉफी के यहाँ बागान बनाए। और आज हमारी वो कितनी जरूरत बन चुकी है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आके बिना चाय पिए वापस जाता है तो आपको वो इंसल्ट लगता है। दैट मच इंडियन इट हैज बिकम। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, ड्रेसिंग की बात कहूं मैं, एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं कि हमारे यहाँ जनरली शादियां अप्रैल और मई के महीने में होती है ना। जरा गर्म मौसम होता है और हमारे किसान को काम खत्म हो जाते हैं तो कम काम होता है, तो उस महीने में हम शादियां करते हैं। और देख लेना, दोज मंथ्स आर द हॉटेस्ट मंथ इन इंडिया, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में तो ये बहुत गर्म के दिन होते हैं, बहुत गर्मी के दिन होते हैं। लेकिन होता क्या है, देख लेना, उस गर्मी में भी हमारा दूल्हा 3 पीस 4 पीस पहन के खड़ा हो जाता है। इट इज नथिंग बट इमिटेटिंग। मैं कहना ये चाह रहा था कि ये 200 सालों का जो कॉलोनियल इम्पैक्ट हम पे पड़ा है, हमारे शिक्षा में है, हमारी सोच में है, हमारे डेमोक्रेसी में है, या हमारे लाइफस्टाइल में है, उसको हटाने के लिए इंडिजिनस एजुकेशन चाहिए। अब और क्यों, दूसरा क्या कारण है? सेकंड रीजन इज हियर, इस सेंटेंस को आपने कई बार पढ़ा होगा, इस वर्ड्स को आपने कई बार सुना होगा। क्या है कि हमें विश्व गुरु बनना है, राइट? दीपा जी, आपने सुना है ना कि कई बार हमारे पॉलिटिशियन है या हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें
विश्व गुरु बनना है। या कुछ लोग कहते हैं कि एक पीरियड ऐसा था, एक समय ऐसा था जब हम विश्व गुरु थे, और जब से ये यूरोपियंस आ गए हमारा धीरे 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 डाउनफॉल हो गया और हम एक डिपेंडेंट नेशन बन गए, हमें गुलाम देश बन गए। अब हमें सारी चीजें बाहर से लानी पड़ती। सो द पॉलिसी मेकर्स बिलीव दैट our ancient education system, that was the indigenous one, that was strong enough, that was competent enough, and because of that, once upon a time we were विश्व गुरुज। एक समय में हम विश्व गुरु थे। तो हमें विश्व गुरु का स्टेटस वापस लेने के लिए या फिर से एक बार पाने के लिए हमें इंडिजीनियस एजुकेशन लाना है। मैं इस बात को मैं यहाँ दोहरा दूं कि इन पॉलिसी मेकर्स को, एनईपी 2020 पॉलिसी बनाने वालों के दिमाग में ये बात है कि होलिस्टिक एजुकेशन मींस इंडिजीनियस एजुकेशन। इंडिजीनियस मतलब हमारे देश का अपना शिक्षा का मॉडल। वो कितना अच्छा था कितना बुरा था उस पर डिबेट हो सकती है, बट दिस इज व्हाट दे मीन। नाउ हाउ विश्व गुरु बनना है तो कैसे बनना है? सिंपल सी चीज है यहाँ कि बाय रिवाइविंग द एशियन मॉडल्स ऑफ लर्निंग। कोई मुझे सुन रहा है ना? हेलो? यस सर, यस सर। यस सर। हाँ, यस नित्यानंद जी आप थोड़ा कैमरा ऑन रखना अगर पॉसिबल है तो। एक व्यक्ति मुझे चाहिए, अदरवाइज डिफिकल्टी होती है मुझे। चलो, सो बाय रिवाइविंग द एशियन मॉडल्स ऑफ लर्निंग, सिंपल सी बात है कि जो भी हमारे देश में प्राचीन हिंदुस्तान में जितने भी विश्वविद्यालय थे उनको रिवाइव करना है। इसलिए बात करते हैं हम नालंदा की, बात करते हैं हम तक्षशिला की, बात करते हैं हम उज्जैनी की। ये जो भी 7-8 विश्वविद्यालय थे उस टाइम में, लगभग मेरे ख्याल से इसी के ही 11वीं 12वीं सदी तक इसमें से कुछ विश्वविद्यालय थे। और अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी दोज वेयर द आइडियल मॉडल्स ऑफ एजुकेशन। अब क्यों आइडियल थे? हमने स्कूल में पढ़ा होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय था, वहाँ बहुत सारे बच्चे आते थे, बाहरी देश से भी आते थे, और जब वो वहाँ यहाँ एडमिशन नहीं पाते तो इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आंसुओं की नदियां बहती थी। इसमें का क्या कहते हैं उसको, एग्जैजरेशन छोड़ दीजिए इसमें का। लेकिन एक बात तो सही है कि कम से कम साउथ एशिया के लिए ये सेंटर दिस सेंटर वेयर द सेंटर ऑफ हायर लर्निंग, क्योंकि उसके हमारे पास कुछ प्रूफ भी है। तो ये पॉलिसी कहती कि हमें विश्व गुरु बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पूरे विश्वविद्यालय हमें रिवाइव करने पड़ेंगे। इसलिए आपने सुना होगा कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय लगभग बन चुका है, लेकिन धीरे धीरे बन रहा है वो, लेकिन उसका उद्घाटन हो चुका है मेरे ख्याल से 6-7-8 महीने पहले उसका उद्घाटन हो चुका है। दूसरी बात, बाय रिविजिटिंग द नेटिव स्कॉलर्स ऑफ साइंसेस, हाँ ये भी बहुत जरूरी है। जिस पॉइंट के साथ मैंने शुरुआत की थी कि हमें सब कुछ यूरोपियन पता है ना, हमें सब कुछ यूरोपियन टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, यूरोपियन साइंसेस के बारे में पता है, यूरोपियन लिटरेचर के बारे में पता है, बट वी डोंट नो और वी लिटल नो अबाउट इंडियन स्कॉलर्स इन दोज पर्टिकुलर एरियाज। कनाद नाम के कोई ऋषि थे, कनाद, जिनका नाम केमिस्ट्री में लिया जाता है। शायद आर्यभट्ट नाम के कोई तो भी एस्ट्रोनॉमर्स थे। भास्कराचार्य नाम का कोई मैथमेटिशियन था, या सुरश्रा नाम का कोई मेडिकल साइंस वाला था। अब ये सारे नाम हमने एज ए पासिंग रेफरेंस सुने हैं, सिर्फ पासिंग रेफरेंस। पतंजलि का कोई योग में पतंजलि थे, या फिर आप कहेंगे कि पाणिनि का ग्रामर था। मतलब हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई इंडियन था जिसने एक क्या कहते हैं कि प्रोमिनेंटली काम किया था, या जिसको कहेंगे कि हम एक
एक मैसिव काम किया था, लेकिन हुआ क्या, दीज पीपल वेर रिमूव्ड फ्रॉम आवर करिकुला। तो ये पॉलिसी कहती है कि टू रिगेन द लॉस्ट स्टेटस ऑफ विश्वगुरु we will make these people part of our curricula. Therefore, the word is by revisiting the native scholars of science. हमारे जितने भी 10-20 जो भी हमारे पास स्कॉलर थे उनको हमें करिकुला में लाना है। थर्ड थिंग, बाय प्रमोटिंग इंडियन लैंग्वेज, आर्ट्स एंड कल्चर। ये तो आपने सही जानते हैं आप। हुआ क्या है कि अंग्रेजों ने हम पे लगभग 200 साल राज किया। English became the language of masters. English became the language of prestige. English became the language of rulers. तो इंग्लिश लैंग्वेज को हम बड़े मतलब अदब के साथ, प्रेस्टीज के साथ उसके तरफ देखते हैं। और जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो इस मल्टीलिंगुअल कंट्री में किसी एक लैंग्वेज को रखना बहुत मुश्किल था। इसलिए हुआ क्या कि वी केप्ट इंग्लिश और वी रिटेन इंग्लिश एज द लिंक लैंग्वेज। लेट मी टेल यू, वी केप्ट इंग्लिश और वी रिटेन इंग्लिश एज द लिंक लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी वाले को तमिल नहीं आती थी और तमिल वाले को हिंदी नहीं आती थी, या फिर मलयालम वाले को पंजाबी नहीं आती थी और मराठी वाले को आसामी नहीं आती थी। तो इन लोगों को लिंक करने के लिए एक लैंग्वेज जो पूरे भारत भर में थी, बहुत कम लोग बोलते थे, लेकिन उसको हमने लिंक लैंग्वेज रख दिया। और ये आगे चलकर बात ये हो गई कि इंग्लिश बिकेम द कंपल्सरी पार्ट ऑफ आवर स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ऑल्सो। बिना इंग्लिश पास करे आप कोई भी डिग्री नहीं ले सकते। बिना इंग्लिश का पेपर पास किए आप ना 10th क्लियर कर सकते हैं, ना 12th क्लियर कर सकते हैं, ना कोई डिग्री ले सकते हैं। तो हुआ क्या कि more importance was given to English, and because of that the Indian languages suffered. ये पॉलिसी मेकर ये कहते हैं कि इंडियन लैंग्वेजेस सफर्ड। नाउ दिस इज द हाई टाइम। ये पॉलिसी कहती है कि अब वक्त आ चुका है कि हम थोड़ा क्या करते हैं, इंग्लिश का थोड़ा सा उसका स्कोप कम करके इंडियन लैंग्वेजेस को हम बढ़ावा देते हैं। Therefore, this policy says we will promote Indian languages, arts and culture. And last thing, let me tell you, by developing programs in sciences of Indian origin. यहाँ बात आती है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया की। आज ये हालत है नीलेश जी की, टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं। टेक्नोलॉजी में साउथ कोरिया जैसा देश आगे है, टेक्नोलॉजी में चाइना जैसा बड़ा देश आगे है, टेक्नोलॉजी में जापान आगे है, मिसाइल बनाने में, फाइटर प्लेन बनाने में फ्रांस आगे है। मतलब ये देश हमसे कई गुना आगे है। और अगर हम चाहते हैं कि फॉरेन के बच्चे हमारे पास आकर पढ़े, तो टेक्नोलॉजी हम उनको कुछ नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी वे हमसे एडवांस है। तो ये पॉलिसी कहते हैं कि हम उस विधा में डिग्री देंगे जो विधा हिंदुस्तान की अपनी है, जैसे कि योगा है, आयुर्वेद है, या सोशल साइंस है, मल्टीकल्चरलिज्म है, ये सारे हिंदुस्तान की बातें। तो for these two reasons, this policy says we need indigenous model of education. मैं इस बार को दूसरी बार आपके सामने रख रहा हूं कि for these policy makers, holistic education or multidisciplinary education means the indigenous education of India. इंडिजिनस मतलब हमारा अपना, एतदेशीय, शायद तो मुझे पता नहीं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हमें देसी कहूंगा यहाँ, देशी शिक्षा। तो ये अब सवाल बनता है हाउ। मैंने अब तक आपके सामने एक बात रखी कि क्यों हम इंडिजिनस एजुकेशन चाहते हैं। मैंने 2 पॉइंट में क्लियर किया कि एक तो हमें कॉलोनियल इन्फ्लुएंस हटाना है जो हम पे 200 साल से ज्यादा पीरियड से बना है, और दूसरी चीज, दूसरा पर्पज ये कि हमें
विश्व गुरु बनना है और विश्व गुरु बनने के लिए हमें अपनी पुरानी चीजें हमारे सामने लानी पड़ेगी। अब उसके आगे का पॉइंट आ जाता है यहाँ कि हाउ टू ब्रिंग द होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरिटी इन आवर एजुकेशन। अब सवाल ये हमारे सामने खड़ा होता है, अब उसको लाना कैसे है। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया है क्या? प्रतीश घुमरे जी का शायद कुछ आ गया था। चलो एनीवे, तो हाउ टू ब्रिंग इट, हाउ टू अचीव इट। अब ऐसा तो संभव नहीं नीलेश जी की कल से हमने डिक्लेयर कर लिया अमरावती विश्वविद्यालय ने कि ये सारा सिलेबस अभी जो है वो हटा दो और पूरा पीछे का ले आओ, जो 200 साल पहले, सॉरी, जो 1000 साल पहले या 1500 पहले था ना। इट इज नॉट पॉसिबल। तो करना क्या पड़ेगा, उसको धीरे धीरे लाना पड़ेगा। एंड दीज आर हियर वेज। यहाँ आपके सामने कुछ चीजें हैं जिसके तहत ये पॉलिसी चाहती है कि हम होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन लाएंगे। एंड द फर्स्ट मेथड हियर रिकमेंडेड इज by modeling our present universities and colleges on the line of Nalanda, Takshashila, Vallabhi and other universities of the past. ये क्यों कहते हैं यहाँ की by modeling our present day universities and colleges? हमें जो आज की जो हमारे विश्वविद्यालय है या कॉलेज है, उसको हमें उनको कैसा बनाना है, जिस प्रकार नालंदा चलता था, जिस प्रकार तक्षशिला चलता था, या जिस प्रकार वल्लभी विक्रमशिला चलती थी। शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि तक्षशिला अब हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है। अगर आप ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा जानते हैं तो दैट पार्ट वेंट विद पाकिस्तान, जो अफगान बॉर्डर के आसपास बड़ा है तक्षशिला। अब तक्षशिला हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन दीज वर द मॉडल्स। अब ये पॉलिसी कहती है कि आज के जो हमारे विश्वविद्यालय है, हमें उनको उन विश्वविद्यालयों की तरह बनाना है। अब वो कैसे थे? फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम में आज इस प्रकार यूनिवर्सिटी ऑफ सॉरी आज इस प्रकार फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, फैकल्टी ऑफ साइंस है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, ऐसा फैकल्टीज का वहां कोई बंधन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। वहां क्या था? बच्चों को अपने जरूरत के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार पढ़ने की आजादी थी। मैं दो चीजें कह रहा हूं, योग्यता और जरूरत। अगर मैं किसी विक्रेता का, व्यापारी का बच्चा हूं, तो अगर मुझे उसी लाइन में कुछ जरूरी है तो उसको मैं वहां जाके मैं लेता था। और मेरी उसमें रुचि भी चाहिए, मेरी योग्यता भी चाहिए। हम भली भांति जानते हैं कि 1500 साल पहले या फिर 1000 साल पहले हम जानते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन वॉज लिमिटेड टू वेरी फ्यू पीपल। आई रिपीट, फॉर्मल एजुकेशन वॉज लिमिटेड टू वेरी फ्यू पीपल। हम समाज के जो ऊपरी 4 हिस्से थे, सिर्फ उनके लिए फॉर्मल एजुकेशन था। बाकी जो निचला तबका था उनके लिए इनफॉर्मल एजुकेशन था। अगर कोई सोनार का बच्चा है तो वो सोनारी घर पे सीख लेता था। अगर कोई कोई कारपेंटर का बच्चा है तो वो चीजें घर पे सीख लेता था। उसके लिए फॉर्मल एजुकेशन नहीं था। फॉर्मल एजुकेशन किसके लिए था? जो पूजा अर्चा करना चाहते थे, जो राजपाट चलाना चाहते थे, जो लड़ाई करना चाहते थे या फिर कोई व्यापार करना चाहते थे, उनके लिए फॉर्मल एजुकेशन था। और उनकी जरूरत के हिसाब से उनको एजुकेशन लेने की वहां क्या कहते हैं हम, आजादी थी। लेकिन आज के हमारे विश्वविद्यालय या आज के हमारे कॉलेजेस हमें आजादी नहीं देते थे। इसलिए धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारे सारे विश्वविद्यालय और हमारे सारे कॉलेजेस, जैसे कि सेकंड पॉइंट में मैंने कहा है, कि धीरे धीरे ये फ्रैगमेंटेशन कम हो जाएगा फैकल्टीज का। फ्रैगमेंटेशन, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये पॉलिसी ने एक जगह लिखा है कि ऑल यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट लॉ एंड मेडिसिन, आई एम स्ट्रेसिंग इट, मैं इसको एम्फसाइज कर रहा हूं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में एक जगह लिखा है कि ऑल यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट
law and medicine will be made multidisciplinary. आज की हालत है सर, इंजीनियरिंग सिर्फ इंजीनियरिंग का देखती है, एग्रीकल्चर सिर्फ एग्रीकल्चर का देखती है, कोई लैंग्वेज यूनिवर्सिटी सिर्फ लैंग्वेज का देखती है, कोई परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग का देखती है. Our present day universities are not multidisciplinary. They put more restrictions than liberty. तो इसलिए ये पॉलिसी कहती है कि हम अपने विश्वविद्यालय को उस प्रकार बनाएंगे जहां फैकल्टी का कोई बंधन नहीं था, फैकल्टी की कोई बंदिशें नहीं थी. देयरफॉर दैट काइंड ऑफ. सेकंड थिंग, जैसे कि मैंने कहा, इसमें एक बात और कही गई है, शायद आपने भी पढ़ा होगा और सुना होगा, कि by 2035 all our single faculty colleges are going to become multi faculty colleges. ये भी है ना, ये भी आपने कहीं पढ़ा होगा कि हमारे पास जितने भी सिंगल फैकल्टी कॉलेजेस हैं, मैं आपको बता दूं, लगभग 30% कॉलेजेस इन इंडिया आर सिंगल फैकल्टी कॉलेजेस. एक ही फैकल्टी का एजुकेशन चलता है. आर्ट्स से तो बाकी कुछ नहीं है, साइंस से तो बाकी कुछ नहीं है, या फिर इंजीनियरिंग है तो बाकी कुछ नहीं है, या लैंग्वेज है तो बाकी कुछ नहीं है. मतलब लगभग 30% कॉलेजेस इन इंडिया आउट ऑफ 45,000 कॉलेजेस, 30% आर सिंगल फैकल्टी कॉलेजेस. इसलिए पॉलिसी कहती है कि हम सबसे पहले अपने विश्वविद्यालय मल्टीडिसिप्लिनरी बनाएंगे और हमारे सारे कॉलेजेस हम मल्टी फैकल्टी बनाएंगे. क्यों? क्योंकि ये फैकल्टी का हमें धीरे धीरे इसको खत्म करके लोगों को चॉइस देना है. बाद में बात आती है, by integrating humanities and arts with science and technology, engineering and mathematics. इन सिंपल भाषा में मैं आपको कहूं, ये जो CBCS आया है, CBCS is the initiative in the direction of breaking the barriers of faculties. I repeat, CBCS, choice based credit system, is the initiative. हालांकि ये NEP आने से पहले ही शुरू था ये. It is an initiative in the direction of breaking the barriers of faculties. क्योंकि मैं जानता हूं मेरा कॉलेज सिंगल आर्ट्स फैकल्टी में है, तो मेरे बच्चों के पास साइंस का कोई भी ज्ञान नहीं है, या वो चाहे तो भी वो ले सकते. अगर मेरा कॉलेज मान लीजिए कि सिर्फ IT कॉलेज है, तो मेरे बच्चों को परफॉर्मिंग आर्ट्स का कुछ भी नहीं वहां मिलेगा, या आर्ट्स का कुछ भी नहीं मिलेगा. अगर ये सारे कॉलेजेस मल्टी फैकल्टी बन जाते हैं तो बच्चों को CBCS के तहत बच्चों को कम से कम कुछ सब्जेक्ट या कुछ क्रेडिट्स उनको आउटसाइड उनके फैकल्टी जाकर लेने की बात होगी. मैं इस बात को यहाँ एक बात को आपको रख दूं, इट इज CBCS. हम जब CBCS की बात हम प्लेटफॉर्म पे आके करते हैं, किसी स्टेज पे जाके करते हैं, क्या कहते हैं लीजिए, अब बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट बच्चा चुन सकता है. हम क्या कहते हैं, अब बच्चों को हमने आजादी दी कि बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, बट नो, इट इज नॉट लाइक दैट. मैं एक सामने बता दूं, इतनी आजादी हमारे बच्चों के पास नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड चॉइस. दीपा जी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन freedom and choice. Freedom is I can do anything, but choice means I have to select out of the available things. इस दोनों को हमें समझना पड़ेगा. Therefore, it is known as CBCS. यूनिवर्सिटी एक क्या कहेंगे, बास्केट ऑफ सब्जेक्ट बनाएगी, बास्केट ऑफ टॉपिक्स बनाएगी, और अवेलेबल में से लेने की आजादी बच्चों को है. सो दैट इज चॉइस, नॉट फ्रीडम. मैं कहने ये जा रहा था यहाँ की CBCS के तहत बच्चा अब अपने फैकल्टी के बाहर जाकर भी कुछ हद तक कुछ क्रेडिट अर्न कर सकता है. और उसी में हम देखते हैं कि उसी में IKS आया है, उसी में स्किल एजुकेशन आया है. एक बात को मैं और यहाँ रख दूं कि बिना CBCS लाए या बिना मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन लाए हम अपने सारे लोगों को स्किल एजुकेशन नहीं दे पाते या नहीं दे सकते. आप लोग तो उसी स्ट्रक्चर उसी डिसिप्लिन से जुड़ते हैं. मैंने एक बार स्टडी की कि हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन का इंटेक कितना है. टेक्निकल एजुकेशन का इंटेक हमारे जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है,
या फिर बीटेक है, एमटेक है, आईटीआई है, जीटीआई है, जितने भी हैं, इन सारों का मिला के इंटेक्सर हमारे पास मुश्किल से 60-62 लाख होता है, मुश्किल से, सारे इसका मिला के। और हमारे पॉलिसी ने टारगेट क्या रखा है कि 2025 तक हमारे हाई स्कूल में पढ़ने वाले और उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले कम से कम 50% लड़कों को कम से कम एक स्किल एजुकेशन देना है। आई रिपीट, it is the target set by NEP that by 2025 the policy has set the target that it will offer at least education in one skill to the 50% of the students studying at high school level and higher education level. अगर इसको हम सारे आंकड़े को मिलाते हैं तो 10 करोड़ के आगे जाता है आंकड़ा। हमारे सेकेंडरी स्कूल की एनरोलमेंट और हायर एजुकेशन की एनरोलमेंट इसको साथ मिलाते हैं तो लगभग 10-10.5 करोड़ हो जाता है। उसका 50% 5-5.5 करोड़ हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपके सामने रखा कि हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन का इनटेक बहुत कम है। सो दिस इज द वे। थर्ड थिंग मैं जैसे कह रहा था कि बाय इनकॉर्पोरेटिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम इन हायर एजुकेशन। हाँ, इस बात को आपने शायद मेरे ख्याल से 2-3 लेक्चर भी इस पे सुने होंगे। आईकेएस क्या है, वो किस सब्जेक्ट में कैसा था, समथिंग लाइक दैट। इन सिंपल वर्ड, आईकेएस मीन्स नथिंग बट व्हाट इंडियंस हैड डन इन पर्टिकुलर और इन सम सेक्टर्स। किसी क्षेत्र में हिंदुस्तान ने क्या प्रोग्रेस किया था या क्या काम किया है या वो कहां तक गए थे, दैट इज नोन एज आईकेएस। और ये पॉलिसी कहती है कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन उसी तरह लाएंगे जब हम आईकेएस ला पाएंगे। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, दीज आर द नेम्स। ये नाम है चरका, सुसूत्रा, आर्यभट्टा, वरामिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्ता, चाणक्य, चक्रपाणी एंड सो एंड सो फोर्थ। इन लोगों ने एक एक विधा में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, कुछ काम किया था। दे फॉर्म द आईकेएस। वो अलग अलग विधा में था। किसी ने मेडिसिन में काम किया, किसी ने मैथमेटिक्स में काम किया, किसी ने एस्ट्रोलॉजी में किया, किसी ने ग्रामर में किया, किसी ने लैंग्वेज में किया। दे फॉर्म आईकेएस। अब ये पॉलिसी कहती है कि वी विल इनकॉर्पोरेट दोज इंडियन स्कॉलर्स इन आवर करिकुला। उसके तहत ही हम अपना आईके जान सकते हैं। होलिस्टिक एजुकेशन तभी आएगा जब हम देख पाएंगे कि हिंदुस्तान ने किसी क्षेत्र में क्या काम किया था। नीलेश जी, अगर आप मुझे अलाउ करते तो एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा। शायद आपने भी उस किताब के बारे में पढ़ा होगा। गिरीश कुबेर जी का नाम तो आपने सुना होगा। गिरीश कुबेर लोक सत्ता के संपादक हैं और 2-3 साल पहले उनकी इंग्लिश में किताब आई है, महाराष्ट्र द रेनेसां स्टेट और अनटोल्ड स्टोरी ऑफ महाराष्ट्र। अनटोल्ड स्टोरी ऑफ महाराष्ट्र अगर आपको कभी गूगल करके देख लेना, इट इज अ वंडरफुल बुक। वंडरफुल बुक मैं कहूंगा। मैं तो आप सारे लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुक पढ़ ले। अगर आपको महाराष्ट्र होने पे थोड़ा प्राइड करना है तो वो किताब पढ़ना चाहिए। इट विल टेल यू व्हाट महाराष्ट्रियंस हैड डन इन पर्टिकुलर एरिया। तो मैं कहना ही चाह रहा था कि फिर वो शिपिंग की बात हो या फिर एयरपोर्ट की बात हो या फिर कुछ और चीजें हो, इसमें प्रयास किए थे इन लोगों ने। ऐसा जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश आने से पहले हम मेडिकल का कुछ भी नहीं जानते थे। हो सकता कि हमारा वो देशी मेथड था, लेकिन कुछ था। चश्मे हमारे पास भी थे। ऐसा नहीं कि चश्मे सिर्फ जब यूरोपियन देश में आए तो चश्मे हमारे पास आए नहीं। कुछ ना कुछ मेथड तो वो टाइम में भी था। मतलब हर हर चीज का कोई ना कोई समाधान हिंदुस्तानियों ने अपने हिसाब से निकाला था। अब हुआ यह कि जो काम उन्होंने किया था वो काम पूरा बंद हो गया या आउट ऑफ साइट निकल गया
जब यूरोपियन एजुकेशन यहाँ आ गया। मैं एक बात और दोहरा दूं यहाँ, जो मैंने पिछली बार कहा था कि इस्लामिक रूलर्स डिड नॉट इंटरफेयर दिस थिंग्स। एजुकेशन में भी उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, प्लीज रिमेंबर। लेकिन ये काम किया यूरोपियन लोगों ने। क्यों किया? यूरोपियन लोगों को अच्छी तरह पता था कि जब तक हम इनकी शिक्षा व्यवस्था को ब्रेक नहीं करते तब तक हम इन पे रूल नहीं कर सकते, राज नहीं कर सकते। तो हम लोगों को कॉलोनियल बनाने के लिए उन्होंने लॉर्ड मैकॉले ने ये लाया था। अब अच्छा था बुरा था, साइड इफेक्ट उसके अच्छे बुरे बहुत है। मैं कहना ये चाह रहा था यहाँ कि जो काम हिंदुस्तानियों ने उस समय में किए थे, बिकॉज ऑफ कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, ऑल दो थिंग्स वेर पुट असाइड, उसको हमने बाजू रख दिया। पिछले 200 सालों में हमने पाणिनि ने क्या किया हमने पढ़ा नहीं, पतंजलि ने क्या किया हमने पढ़ा नहीं, भास्कर गुप्त ने क्या, भास्कर आचार्य ने क्या किया हमें पता नहीं। मतलब वी डोंट नो आवर ओन पास्ट, वी डोंट नो व्हाट आवर एंसेस्टर डिड इन देयर ओन टाइम। सो दिस पॉलिसी सेज by making our education multidisciplinary, we will reintroduce or we will introduce IKS there, जैसे कि ये बात की थी मैंने। अब बात आती है नॉट ओनली दैट, हम कहते कि जनरली वी से दैट लॉर्ड मैकॉले इंट्रोड्यूस द इंग्लिश एजुकेशन। हम क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार या शुरुआत लॉर्ड मैकॉले ने की। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, मेरे ख्याल से कुछ रुक चुका है। यस यस, हाँ आपने, इट्स Now, ओके, इट्स ओके। क्योंकि आपका आपका पिक्चर स्टेटिक हो गया था, मैं समझा मैं डिस्टेंट हो गया। चलो, तो मैं कहने, audible, sir, audible. यस थैंक यू। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू दैट लॉर्ड मैकॉले ब्रॉट इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन में टू थिंग्स हियर, एजुकेशन इन इंग्लिश एंड एजुकेशन ऑफ द इंग्लिश ओरिजिन। एक तो मोड ऑफ डिलीवरी भी इंग्लिश रहा और जो कंटेंट था वो भी इंग्लिश रहा। जैसे कि मैंने कहा कि यूरोपियन साइंसेस आ गए, ब्रिटिश लिटरेचर आ गया या ब्रिटिश सोशल साइंसेस आ गए हमारे पास। तो हुआ क्या कि वी बिगैन टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू इंग्लिश। शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 18 शेड्यूल में कुछ 22 भाषाएं को रिकॉग्नाइज किया गया है। 22 लैंग्वेजेस आर enlisted in the 18th schedule of our constitution. आपको जानकर हैरानी होगी सर कि इंग्लिश उन 22 भाषाओं में से एक नहीं है। उसमें मराठी है, कोंकणी है, छोटे मोटे बहुत सारे लैंग्वेजेस है, लेकिन इंग्लिश इज नॉट वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस। फिर भी जिस भाषा को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है फिर भी हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। अब दिस पॉलिसी से ग्रेजुअली वी विल रिड्यूस द स्पेस गिवन टू द इंग्लिश लैंग्वेज। इसलिए अब हम देखते हैं कि हमारा इंग्लिश का करिकुला अब नए एनईपी के सिलेबस के अनुसार कम हुआ है। जो पेपर हम पूरा साल पढ़ाते थे अब उसको एक सेमेस्टर में ही निपटाना है। One thing. Second thing, the policy says enough is enough. English as a language is okay, but it should not be at the cost of Indian language. इंग्लिश भारतीय भाषा की जगह न ले सके, इसलिए क्या कहती है पॉलिसी? द पॉलिसी से नाउ इन ऑल यूनिवर्सिटीज द डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत विल बी स्टार्टेड। इस बात को मैं आपके सामने रखूं, ये पॉलिसी ये मानती है कि संस्कृत इज द ज्ञान भाषा ऑफ इंडिया। मानने वाले तो उसको देव भाषा भी मानते हैं, लेकिन हम देव भाषा की बात नहीं करेंगे। वी विल से दैट संस्कृत इज ज्ञान भाषा, एंड टू सम एक्सटेंट आई से द नॉलेज ऑफ द एशियंट इंडिया इज इन संस्कृत। Therefore, the policy says in all universities, the Department of Sanskrit will be there. Not only that, other ancient classical languages also be studied there. जैसे तमिल हो, मलयालम हो या फिर कन्नड़ हो,
ये क्लासिकल लैंग्वेज है साउथ की। अब तो मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते मराठी को भी वो स्टेटस प्राप्त हुआ है। वो तो बात राजनीति की बात छोड़ दीजिए, लेकिन इट हैज बीन गिवन टू द मराठी ऑल्सो. सो along with Sanskrit, other languages also will be studied. And at the same time, the policy talks about starting an Indian Institute of Interpretation and Translation, that is called IITI. I repeat, the policy talks about starting an Indian Institute of Interpretation and Translation, IITI, where, because India is a multilingual country, and we know that each language is rich in its own right. So to transform the knowledge from one language to another language in translation and interpretation, such kind of institute is proposed. उसके बाद बात आती है by using the mother tongue and local expertise in teaching. ये भी बात है, देखो मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे बनाना है, उसको इंडियन कैसे बनाना है. आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसका जीआर भी निकाला है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस. आपने सुना है इसके बारे में, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस? Yes, sir. Yes. ये नई चीज आई है ये एनईपी के बाद. एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए अगर आपको किसी को अपॉइंट करना है एज ए स्पेशल केस, तो जरूरी नहीं कि वो उस सब्जेक्ट में मास्टर हो या डॉक्टरेट हो, नॉट नेसेसरी. आपके प्रदेश का कोई सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट या सक्सेसफुल बिजनेसमैन आके आपको एंटरप्रेन्योरशिप सिखा सकता है. या अगर अनदर एग्जांपल दूं कि मान लीजिए कि आपके प्रदेश में कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन है या गायक है, आप ऐसे व्यक्ति को भी 1 साल के लिए अंडर दिस रूल यू कैन अपॉइंट हिम और हर एज द प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस. जरूरी नहीं उस व्यक्ति ने एमए संगीत किया हो या संगीत में पीएचडी प्राप्त की हो. विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन यू कैन अपॉइंट सच पर्सन एज द प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस. तो इस प्रकार में मल्टी डिसिप्लिनरी की बात की. फिर बात है, मैं आपको एक बात और यहां बता दूं कि दिस पॉलिसी सेज दैट वी विल बिगिन टू टीच even the subject like science and technology in mother tongue or in regional languages. आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ सागर भोपाल के पास अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है. अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय. मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 साल से वहाँ साइंस, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट अब हिंदी में पढ़ाना शुरू हो चुका है. मैं ये भी मान लूं कि इतना आसान नहीं है ये, बट द थिंग हैव बिगन. हमारे विश्वविद्यालय में भी किताबों का रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन करना शुरू हो चुका है. मतलब दिस इज अगेन वन थिंग which reduces or which I can say reduces the space given to the English. इंग्लिश को जो हमारे पास अन्य साधारण महत्व है उसको कम करने की बात होगी. अनदर थिंग, बाय गिविंग वैल्यू एजुकेशन, ये भी बड़ी बात है, यहाँ पॉलिसी की बात करते हैं. मेरे ख्याल से अब तक हमारे एजुकेशन में वैल्यू एजुकेशन नहीं था, उसका कोई अलग से पेपर नहीं होता था. वो नेचुरली किसी सब्जेक्ट में आ जाता था, फिलोसफी में आ जाता था, कभी कभी लिटरेचर में इनडायरेक्टली आता था, और पॉलिटिकल साइंस में, और इसमें सारी चीजें आती थी. बट अब अगर आप ये नया सीबीसीएस पैटर्न देखोगे अकॉर्डिंग टू एनईपी, तो आपको शायद ये पता होगा या आपने देखा होगा कि हो सकता है कि सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में एक वैल्यू एनहांसमेंट कोर्स या कुछ क्रेडिट उसके लिए दिए जाएगी. मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम दिस वैल्यू एजुकेशन हैज बिकम अ नोटेबल पार्ट और कॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर करिकुलम. अब उसमें क्या करने जा रहे हैं वे, सम पर्टिकुलर इंडियन वैल्यू, जैसे कि ज्ञान, प्रज्ञा, सत्य, अहिंसा, such things are there. But at the same time, the policy talks about constitutional values also. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स के बारे में भी बात करेंगे, और सर्टन नॉट ओनली ड्यूटीज एंड राइट्स
not only values and duty rights, but it will talk about fundamental duties of the citizen also. So these things which were not part of our curricula so far are going to enter in our curricula. Means my point is what, मैं ये सारी चीजें मैं क्यों गिन रहा हूँ, इस प्रकार ये पॉलिसी हमारे शिक्षा को, हमारे एजुकेशन को मल्टीडिसिप्लिनरी बना रही है. मतलब पहले तो फैकल्टीज के वॉल खत्म हो जाएंगे, हमारे सारे कॉलेजेस मल्टी फैकल्टी हो जाएंगे, सारी टेक्नोलॉजी आ जाएगी हमारे आर्ट्स के फैकल्टी में, हम अपने आईकेएस को पढ़ लेंगे, हम ट्रांसलेशन भी सीख लेंगे, हम लोकल को भी बुलाएंगे, ये सारी चीजें. थोड़ा हम आगे जाते हैं. या ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रख ली. आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर आपने ये कहा वो कहा, क्या ये इतना आसान है करना? बिल्कुल नहीं. हम देखते हैं कि जब भी कोई एनईपी कोई बात करता है तो वो ये बहुत अच्छा है ऐसा ऐसा कहता है. आई एग्री, बट रिमेंबर इट इज नॉट सो इजी, इट इज नॉट अ केक वॉक. इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना आसान बात नहीं है. वी हैव सम चैलेंजेस विच आर पोज्ड बिफोर अस, और उसको एडमिट करे बिना, उनको एक्नॉलेज करे बिना, उनको एड्रेस करे बिना इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना लगभग असंभव है. मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट द फैक्ट्स बिफोर यू एज दे आर. अगर मैं सिर्फ एक ही साइड पे बात करूंगी पॉलिसी बहुत अच्छी है, हम विश्वगुरु बन जाएंगे, हम सुपर पावर बन जाएंगे, हमारे सारे स्टूडेंट स्किल एजुकेशन लेंगे, वर्कफोर्स बनेंगे. कई बार कहते हैं ना कि हमारे पास दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी है हमारे देश में. वे हैव द लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन विद इंडिया. हमने कई बार ये सुना है. ये अच्छा भी है और बुरा भी है. हम ये जानते हैं कि अगर ये बच्चे कुछ काम करेंगे तो दे कैन कंट्रीब्यूट टू आवर जीडीपी, इट कैन बिकम एन एसेट. अगर ये हाथ, ये युवाओं के हाथ अगर काम करने वाले हाथ में तब्दील हो जाते हैं तो दे आर एसेट टू अस, ये हमारे लिए संपदा है. बट if those hands are empty and those are just eating hands, feeding hands, they are liability to us. ये हमारे लिए बोझ भी बन सकते हैं. इसलिए स्किल एजुकेशन की बात आती है. लेकिन क्या स्किल एजुकेशन लाना इतना आसान है? मैंने चलते चलते एक बात आपके सामने की. ये पॉलिसी कहती है कि 2025 तक हमें लगभग 5-5.5 करोड़ लोगों को, बच्चों को कम से कम एक स्किल पढ़ाना है. लेकिन ऐसा कोई प्रैक्टिकल स्किल पढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, जो लैबोरेटरीज लगते हैं, जो वर्कशॉप्स लगते हैं, क्या वे हमारे पास है क्या? मैंने कहा कि हमारा टेक्निकल एजुकेशन का इनटेक मुश्किल से 65-66 लाख है. हम 1 करोड़ भी पकड़ लें, व्हाट अबाउट रिमेनिंग 4 करोड़? उनको हम कहाँ एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन दे पाएंगे? दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस. सबसे पहली बात, जैसे कि आप भी जानते हैं, है ना, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना कुछ हो भी नहीं सकता. दैट इज द फैक्ट, है ना. पैसा खुदा नहीं, लेकिन पैसा खुदा से कम भी नहीं, हम बोलते हैं ना कभी कभी. द फर्स्ट चैलेंज बिफोर द एंटायर हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज फाइनेंस. हमारे पास शिक्षा के लिए फाइनेंस की कमी है. ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड है कि आज भी हमारे देश के विश्वविद्यालय में लगभग 30-40% वैकेंसीज आर देयर. दिस इज ऑफिशियल रिकॉर्ड. 30-40% वैकेंसीज ऑफ टीचिंग फैकल्टीज आर देयर. नॉट ए जी की मैं बात ही नहीं कर रहा. इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है. सैलरी के लिए पैसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से बनाएंगे? सो अनलेस अगर हम कॉम्पिटेंट टीचिंग फैकल्टी रिक्रूट नहीं करते हैं, अगर हम रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, अगर हम रिक्वायर्ड सपोर्टिंग स्टाफ नहीं बनाते हैं,
अगर हम रिसर्च के लिए ग्रांट नहीं देते हैं तो ये सारी पॉलिसी सिर्फ पेपर पे अच्छी लगने लगेगी, ऑन ग्राउंड इट विल नॉट कम। तो सबसे बड़ा इशू हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज अगर कुछ है तो हमारे पास फाइनेंस का है। अगर आप हम हर पॉलिसी में देखते हैं कि बात करते हैं कि जीडीपी का कम से कम 6%, कम से कम 6% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, लेकिन आज भी हम 3, 3.25, 3.5 के आगे नहीं जा पाए। ये बात पिछले कई सालों से होती आ रही है, 6% जाना चाहिए, लेकिन मुश्किल से 3, 3.5% जाते हैं। और अगर आप में से कोई इकोनॉमिक्स का है या फिर बजट में रुचि रखता है तो वो देख ले कि पिछले 3 बजट में शिक्षा का खर्च धीरे 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 कम हो रहा है। इट इज गेटिंग डाउन, इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस। अब गवर्नमेंट ने उसमें फंडा क्या निकाला है, गवर्नमेंट इज विड्रॉइंग इट्स हैंड एंड दिस सेक्टर इज बीइंग ऑफर्ड टू प्राइवेट पीपल। इस पॉलिसी में इस वर्ड को शायद लीजिए आपने सुना होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट एक वर्ड इस्तेमाल किया है, मीन्स पीपल विद द हाई सोशल कमिटमेंट। एक शब्द आपका, मेरा सेशन खत्म होने के बाद आपको जब भी टाइम मिलता है आप और एक बार उसको पॉलिसी को पढ़ लेना इंग्लिश में, वहां एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपी मीन समाज सेवा, या मैं कहूंगा पीपल हु हैव हाई सोशल कमिटमेंट, समाज के प्रति कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बढ़ावा देने की बात ये पॉलिसी कहती है। इन अदर वर्ड्स, इन डायरेक्ट वर्ड, लेट मी टेल यू, दिस पॉलिसी इज गिविंग मोर एंड मोर स्पेस टू प्राइवेट पार्टनर्स। आप उसको प्राइवेटाइजेशन कहें, आप उसको प्राइवेट सेक्टर को देना कहें, वट एवर यू वर्ड्स यू मे यूज। इसलिए 21-22 का अगर आप AICG का रिपोर्ट देखोगे, 21-22 का ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन का रिपोर्ट देखोगे तो आपको वहां दिखेगा कि हमारे देश में 426 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। आई रिपीट, 426 स्टेट यूनिवर्सिटीज है और 476 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। हमारे देश में लगभग 65% कॉलेजेस आर प्राइवेट कॉलेजेस एंड अनएडेड कॉलेजेस है। और मैं अपने दिल से नहीं कह रहा, ये मैं डेटा है अपने पास। 65% कॉलेजेस आउट ऑफ 45,000 कॉलेजेस आर अनएडेड एंड प्राइवेट कॉलेजेस, और आने वाले समय में ये बढ़ने जा रहा है। माय पॉइंट इज दैट गवर्नमेंट अपना हाथ धीरे धीरे निकाल रही है। मैं किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ये पिछले कई सालों से चला है। एंड more space is given to the private people, and we know that in private money making comes in the first position. कॉलेज बनता है, विश्वविद्यालय बनता है तो एज एन इंडस्ट्री बनता है, एज ए बिजनेस बनता है, एंड मनी मेकिंग कम्स देयर। सो दैट इज वन इशू। सेकंड थिंग, जैसे कि हम बात कर रहे थे IKS की, ये पॉलिसी बात करते हैं कि दे आर गोइंग टू रिवाइव नालंदा विश्वविद्यालय, और दे आर गोइंग टू मॉडल आवर प्रेजेंट डे यूनिवर्सिटीज ऑन दैट लाइन। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आज भी बना है, क्या हमारे पास इसका पुख्ता सबूत है कि वो विश्वविद्यालय किस प्रकार चलते थे? आई डोंट नो वेदर वी हैव ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज और नॉट। तो ये भी हमारे सामने बड़ा चैलेंज है, हमारी शिक्षा व्यवस्था को होलिस्टिक बनाने के लिए, मल्टीडिसिप्लिनरी बनाने के लिए। मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस ये तो ला सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार की होलिस्टिक एजुकेशन की बात नालंदा विश्वविद्यालय करता था, उसको लाने के लिए हमारे पास ये बड़ा इश्यू है। वी आर इन द लास्ट पार्ट। देन ट्रांसलेटेबिलिटी ऑफ द मॉडर्न साइंसेस इन नेटिव लैंग्वेजेस, ये भी बहुत बड़ा इश्यू है। जैसे कि आप में से कोई कह सकता है कि भाई साइंस हम हिंदी में कैसे पढ़ाएंगे, या साइंस हम मराठी में कैसे पढ़ाएंगे। वी नो that most of the terms there are in English, and we don't have equivalent to those words in our languages. उस टर्म का, उस कॉन्सेप्ट का हमारे पास काउंटर पार्ट नहीं है। सो दैट इज अनदर इश्यू। और मेरे ख्याल से सर,
पांचवा पॉइंट पहले लूंगा, फिर मैं चौथा लूंगा कि एम्प्लॉयबिलिटी इश्यूज इन रिवाइवल ऑफ संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। नीलेश जी सिर्फ मुझे 2 मिनट देना, ज्यादा नहीं। गुमले जी, आर यू देयर? प्रतीश जी? Yes, sir. हाँ, यस, थोड़ा सा मुझे 2 मिनट देना, ज्यादा नहीं। आई एम कंक्लूडिंग। तो व्हाट माय पॉइंट इज हियर, द लास्ट challenge here, before that I will discuss. I told you that this policy says in every university there should be a department of Sanskrit, or Sanskrit studies will be encouraged. The Right. studies in Indian languages will be encouraged. लेकिन सवाल ये बनता है, जब तक हमारे युवाओं को ये भरोसा नहीं आएगा इसको पढ़ने से हमें कोई एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है, तब तक नहीं जाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी फैकल्टी, एनी डिसिप्लिन। जैसे कि मेरे प्रोफाइल में सर ने कहा कि आई डिड माई मास्टर एंड माई रिसर्च इन इंग्लिश। व्हाई? आई एम अ मराठी स्पीकर। अप टू 12th my entire education was in Marathi medium. But why I went for English? I went for English because somewhere in my mind there was some hope that if I continue in English, I will get some kind of employment. मुझे कहीं ना कहीं भरोसा था कि अगर मैं इंग्लिश में यूजी करता हूँ, पीजी करता हूँ, तो मुझे कम से कम कोई जॉब मिल जाएगा, छोटा मोटा जॉब मिल जाएगा। मतलब इंग्लिश को लेकर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये होप थी। नाउ माय क्वेश्चन इज वेदर द सेम होप इज देयर अबाउट संस्कृत। हम तो जानते हैं संस्कृत इज नॉट, आई कैन से, हम जिसको लोक भाषा कहते, इट इज नॉट लाइक दैट। व्यवहार है मैडम, आप सुन रही है ना मुझे? Yes, sir. Yes, sir. संस्कृत इज नॉट स्पोकन, लोक भाषा नहीं है ये। संस्कृत मेरे ख्याल से थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ उत्तराखंड में है, थर्ड ऑफिशियल, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट फर्स्ट वन। संस्कृत मेरे ख्याल से सिर्फ संस्कृत विश्वविद्यालय में जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं वो देखते हैं, कोई और भाषा नहीं उसके बारे में बात नहीं करता। तो व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट संस्कृत इज गोइंग टू ऑफर मी? सबसे पहले मेरे दिमाग में ये सवाल होगा, व्हाई शुड आई स्टडी संस्कृत? मतलब संस्कृत को बढ़ावा देना और संस्कृत के तहत आईकेएस लाना या मल्टीडिसिप्लिनरी लाना या होलिस्टिक एजुकेशन लाना, अगर ये पर्पस है, अगर ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि संस्कृत एम्प्लॉयबल है या नहीं है। एंड द सेम क्वेश्चन में बी इन अदर इंडियन लैंग्वेज आल्सो। एंड लास्ट वन, जो मेरे लिए या मेरे दृष्टि से सबसे बड़ा चैलेंज है, द लास्ट वन, जस्ट 1 मिनट, दैट इज ट्रस्ट डेफिसिट, भरोसे की कमी। मैं जानता हूं दिस इज पब्लिक प्लेटफॉर्म, दिस इज एकेडमिक प्लेटफॉर्म एंड पीपल आर नॉट मच फोकल। हम प्लेटफॉर्म पे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्लेटफॉर्म पे हम गुड़ी गुड़ी रहते हैं, बट आई नो दैट देर आर डिस्कशन इन प्राइवेट स्पेयर ऑल्सो। हम जब इनफॉर्मल मोड में बात करना शुरू करते हैं तो इस पॉलिसी को लेकर आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो मासेस के दिमाग में आता है, हम जिसको बहुजन कहते हैं, सबसे पहला सवाल हो, कुछ लोग उस प्रकार उसको रेज भी करते हैं। क्या कहते हैं? अब क्या हम ज्योतिषी शास्त्र पढ़ेंगे क्या? अब हम पूजा अर्चा पढ़ेंगे क्या? संस्कृत पढ़ के फिर क्या वही सिस्टम हम लाने जा रहे हैं? रिवाइवल ऑफ एशियन एजुकेशन कहते हैं ना ये पॉलिसी। अगर रिवाइवल है तो क्या रिवाइवल सेलेक्टिव है क्या एंटायरली है? सेलेक्टिव है तो ठीक है, एंटायरिटी में है तो हम जानते हैं कि उस टाइम में 1000-1500 पहले सारे लोगों को पढ़ाई की आजादी नहीं थी। इट वॉज ओपन फॉर फ्यू ओनली। अगर हम उस प्रकार की शिक्षा लाने जा रहे हैं तो सम क्वेश्चन आर बीइंग रेज्ड देयर। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम उसी जगह जा रहे हैं जिस जगह से हम बड़ी मतलब मुश्किल से यहां तक आ चुके हैं? क्या ये पॉलिसी उसी प्रकार का टाइम और एक बार लाना चाहती है? दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन रेज्ड बाय द पीपल। अनदर थिंग, जैसे मैं कहूंगा कि अपोजिशन फ्रॉम द सदर स्टेट, ये भी आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने
अपने बात को रखा था यहाँ की दिस पॉलिसी गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू संस्कृत। हर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग खुलना चाहिए, हर कॉलेज में संस्कृत विषय आना चाहिए। ओके, मतलब 1% में थिंक, कोई व्यक्ति, कोई समाज या कोई व्यक्ति ये शायद सोच सकता है कि शायद हम लोगों पे संस्कृत थोपी जा रही है। एंड वी नो व्हाट हैपेंड व्हेन देयर वर एफर्ट्स टू मेक हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। हम जानते हैं कि नीलेश जी, आज भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ऑफिशियली हिंदी इज नॉट राष्ट्रभाषा, इट इज राजभाषा इन समवेयर, इट इज नॉट राष्ट्रभाषा। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन हम जानते हैं कि साउथ में उसको लेकर बहुत अपोजिशन हुआ था। उसी प्रकार का अपोजिशन शायद संस्कृत हो सकता है इफ सर्टेन थिंग्स आर देयर। एंड लास्ट थिंग, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में एक सबसे बड़ी दिक्कत मुझे दिखती है, दैट इज पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट। वी आर अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। सेंटर में एक पार्टी का रूल होता है, स्टेट में किसी और पार्टी का रूल होता है। एंड इफ द सेंटर एंड स्टेट आर नॉट ऑन गुड टर्म्स, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट। और हम देखते हैं कि मेरे ख्याल से कर्नाटक गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो एनईपी, वी आर गोइंग टू फॉलो एसीपी। हम अपना एसीपी बनाएंगे। अभी कितना सच है कितना झूठे मैंने जानता, लेकिन समवेयर आई हर्ड। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा था कि वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट एनईपी। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। ये कुछ इश्यू है जिसको लेकर हमारे दिमाग में सवाल है। सो फाइनली नीलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए स्क्रीन पे बने रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। अब आई डोंट नो हाउ फार आई कुड ऑफर टू यू समथिंग, बट कोशिश की कि आई ट्राई टू मेक इट as simple as possible as far as this multidisciplinary is concerned. उसको मैं समराइज करना चाहूँ तो I just made 3 points. Why multidisciplinary education? Second, how it is being brought, and third, what challenges are there. These are the 3 points I tried to make before you. Thank you very much. अगर आप में से कोई मैंने जो कहा उससे डिसएग्री करना चाहता है, उसका भी स्वागत है। अगर कोई इसमें कोई जोड़ना चाहता है, उसका भी स्वागत है। और इसके बावजूद कोई अलग पक्ष रखना चाहता है तो उसका भी स्वागत है। बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में असहमति का स्वर भी जोर शोर से उठना चाहिए। प्लीज, ओवर टू यू। थैंक यू सर। मैं एक बताना चाहूंगा सर कि आपने आपकी बात बिल्कुल खुलकर रखी। बाकी रिसोर्स पर्सन जैसी थोड़ा घुमा फिरा कर छुपा कर ऐसा नहीं रखते हुए जो भी बात रखी वो आंकड़ों के साथ और मुद्दों के साथ नाम लेके रखी। बहुत ही कम रिसोर्स पर्सन ऐसे होते हैं जो इतना पिन पॉइंट बोलते हैं। मैं इसका क्रेडिट ना महाराष्ट्र की मिट्टी को देना चाहूंगा। बहुत अच्छा सर। इसलिए कि साउथ इंडिया की एक खासियत रही है। यस सर। साउथ इंडिया कभी भी लंबे समय तक नॉर्थ इंडियन के अंडर में नहीं रहा है। आते थे, जीतते थे, जैसे वो जाते थे बाद में वो झंडा उठाते थे। सही बात। और ये तो कोई भी आप विजयनगर एम्पायर लीजिए, यादव लीजिए, राष्ट्रकूट लीजिए, और आज भी देख लीजिए ना। अभी ऑनलाइन है, फिर भी मैं कुछ बातें मैंने कहना है अवॉइड किया। अगर हरिवंश राय बच्चन जी का एक लाइन है, उसको समझ लीजिए। वो कहते हैं कि छिपाना अगर मैं जानता तो दुनिया मुझे संत कहती। छिपाना अगर मैं जानता तो दुनिया मुझे संत कहती। शत्रु मेरा बन गया है मेरा छल रहित व्यवहार। अच्छा। जो भी चीजें कहना है ओपनली कहना है। अगर झुके रहना हो तो महाराष्ट्र से कब से कोई प्राइम मिनिस्टर बन चुका होता है। there are many more things to say that। और आज भी डिसएग्रीमेंट होता है सर। yes. सर दूसरी बात जो आपने बात रखी, अभी कितने दिनों से, सालों से जो 3% से ऊपर जा नहीं रहा हमारा जीडीपी, 3-5%। इसके लिए किसको जिम्मेदार पकड़े? कितने सारी सरकारें बदली, लेकिन पता नहीं। यही बात सुरक्षा की भी है, रक्षा पे भी हुई। एक लाइन में कह दूं, हाँ, पॉलिटिकल विल। यस सर, वो तो हो।
हमारे देश में, मैं उसको पॉजिटिव में भी लेता हूँ, हाँ। अगर हमारे देश में कुछ अच्छा हुआ है तो द क्रेडिट गो टू पॉलिटिक्स ओनली, अगर बुरा हुआ है द क्रेडिट गो टू देम, बिकॉज वी पीपल आर जस्ट इम्प्लीमेंटर्स, एग्जीक्यूटिंग बॉडीज, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, डिसीजन तो वही होता है ना। बिल्कुल। मैं और एक बात पे आपकी राय yes, जानना चाहूंगा, प्लीज। क्या एचआरडी मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाने से कुछ होगा? जल कहो या पानी कहो, काम तो एक ही है। सही बात है सर, बहुत अच्छा। लेकिन उनके पीछे ये सोच थी कि एचआरडीसी, उसको एचआरडीसी नहीं कहता था, उसको एचआरडी कहते थे, एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो वो इसके पीछे जस्टिफिकेशन ऐसा दिया गया कि ह्यूमन कोई रिसोर्स नहीं है, हम शिक्षा देते हैं, रिसोर्स में संस्कार नहीं आते हैं, शिक्षा में संस्कार आते हैं। समवेयर ये पॉलिसी मेकर संस्कार, ये जो उसको लग के वो जरा पैकेज है ना, उस पर जोर देते हैं। तो ना, लेट मी टेल वन मोर थिंग, 1986 के पहले इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। अर्जुन सिंह थे जिन्होंने इसको एचआरडी बनाया था। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। देखो भाई, किसी रोड का नाम 10 रेस कोड रखो या जनपद रखो, कुछ रखो, जाना तो उसी पे चल के, उसको सर पे लेके तो जाना ही नहीं। बराबर, बहुत उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अगर इजाजत है तो आई वुड लाइक टू लीव। चलो, thank you. Prasha madam, please go for it. Thank you. Yes, sir. Good evening to one and all present here now. On behalf of Santa Gadge Baba Amravati University and Sipna College of Engineering and Technology, it is my privilege to extend a heartfelt vote of thanks to Professor R.T. Bedre, sir, Professor and Director of UGC Malviya Mission Teacher Training Center, and Dr. Hari Singh Gaur University, Sagar, for conducting today's session on holistic and multidisciplinary education. Sir, your comprehensive insights on how education should just not focus on the academic excellence, but should also on developing a well-rounded personality through multidisciplinary approaches have made us understand a broader vision that is being set to us for the NEP 2020. I appreciate your time and effort you have dedicated to sharing your knowledge with us. Thank you so much, sir. मैडम, मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें तो नहीं की थी जो आपने मुझे बारे में कही है। So it was aligned with the धन्यवाद करतो. धन्यवाद आणि महत्वाचं मराठीत बोलतोय की कृपया अमरावतीला, महाराष्ट्रामध्ये आपल्या मायभूमीत एकदा तरी अमरावतीला यावं आपण फिजिकली. अरे आप दावत दीजिए, आ जाएंगे ऐसे घूमते घूमते। अब सर एमपी में शिफ्ट होके कितने साल हो गए? मैं इस 31 अक्टूबर को मैंने 5 साल पूरे किए यहाँ। अच्छा अच्छा, मतलब मेरी एक पंचवार्षिक योजना, कौन सी इलाके से बिलोंग करते हैं? मेरी पंचवार्षिक योजना पूरी हो चुकी है मैं एमपी में। बेसिकली आई बिलोंग टू परभनी, इन परभनी गंगाखेड़। अच्छा, गंगाखेड़, गोदावरी का कांटा है। यस सर, गंगा किनारे वाला हूँ। यस सर, नेक्स्ट टाइम आके अमरावती से गुजरेगा, बाकी लोगों से मुलाकात होगी सर। संजय खेड़ी जी, यस सर, आई डेफिनेटली। चेतना इंस्टीट्यूट ऑफ सिपना सर, रिवर सर, सिप्रा जो है सर वो आपकी तरफ है। हाँ, ये सिपना जो है बेलघाट में है। द हिल स्टेशन चिखलदरा आपने सुना होगा, बेलघाट रीजन। मुझे और एक बार मुझे नाम बताइए इंस्टीट्यूट का। सिपना, SIPNA। ओके, सिपना इंस्टीट्यूट प्रॉपर अमरावती में है ना? यस सर। If you share your number, I can send you very deep brochure. Shall I write it here? 1 minute. Number is with me. I will share with you. Okay. चलो, thank you very much. मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। You can phone me at any time. Okay sir. सिर्फ 7 के पहले और 10 के बाद नहीं करना, घबरा जाता है आदमी। चलो, thank you very much. Thank you, नमस्ते, bye. Thank you sir, so nice. Thank you, good night, bye, take care.